Yeah, yeah, yeah. Yes, thank you for confirmation. So we waiting for student for 5 minutes more, and then we can start. So at 10:10 we can start the session. Everyone, please note.
Okay, so very good morning, all of you. Welcome all of you for the today's free webinar on roadmap to for GPAT and NIPER. And before starting the session, I just want to introduce our guest, and he's an expert in uh, he's already qualified NIPER, and it's in as a scientific writer he is working. Just introduce him first, and then we can able to start the session. So first of all, welcome Susmit Gogate sir for joining this session, and thanks for here on our invitation, and definitely your expertise will help our all students. So our expert name is Susmit Gogate, and he is working as a scientific writer at Sanofi, and also he has working in reviewing scientific content with a focus on key molecule across Sanofi's immunology and rare disease therapeutic areas, utilizing at an omni-channel marketing approach. And its education is BPharm from BNB Swaminarayan College of Pharmacy, Salwao, and again he qualified GPAT with All India rank 201 and NIPER JE with All India rank 57 in 2020. And he's pursue MS Pharma from Department of Medicinal Chemistry, NIPER Mohali, under Professor Sankalp K. Guchet. And During his post-graduation, he has various administration positions at the Department of Medicinal Chemistry, such as Head of Placement Cell, Head of Web Development Committee, Professor S.K. Guchet Research Group, then Associate Coordinator of Alumni Association in charge of Social Network Handling Committee. Then professional achievement, he is awarded twice for the development of high quality document for immunology at Sanofi and infectious diseases at Indigen. Then next led the 9-member speaker panel for guidance of newly hired medical writers at Indigen. Then recognized as one of top 5 performing trainers at Indigen. Then also become the first MS Pharma student to develop 20 successful method for isolation of NCE by automated flash chromatography, and the Academic Excellence Award he got for standing 7th in JTU winner 2017 examination. Okay, and he has a professional membership of American Chemical Society, Bombay College of Pharmacy Student Chapter, then American Association of Pharmaceutical Scientists, Bombay College of Pharmacy Student Chapter. Okay, so this is the brief introduction of our today's guest, and as from this all information we come to know he is a really good experience, and having insights about the industry that will help all of you to get more information about the uh, GPAT and NIPER along with the career goals also. Okay, we are not only focusing on GPAT NIPER but career goals, and also your questions will be solved. So uh, welcome, Susmit sir, for here in our session. Without wasting any time, I hand over this session to you, and you can take the sessions. Thank you. Yeah. Thank you, Amit sir, for this brief introduction about me. So I'm also happy to present my experience here during the GPAT as well as NIPER qualification for regarding with our students. So Sure. I'm glad to be here. So I'm sharing my screen. Uh, Hope my screen is visible right now. Yes. Everyone, please confirm. Okay. Is it Yeah. visible? Yeah. Visible. Yeah. Okay, fine. Start. So the title of this today's topic is GPAT and NIPER JE, your gateway to excellence in pharmaceutical career. The main motto behind this title, the excellence in pharmaceutical career, is like I believe, for any BPharm students who is taking admission, who is actually entering into the pharma field right from the first year. Usually, first year BPharm students can relate it. So for them, it is like GPAT as well as NIPER J. These are the gateways for excelling in your career. So that is the motto behind the title of this talk. So before actually starting my presentation, I would like to just have one disclaimer that all the content and opinions which are expressed and communicated in this presentation are entirely of my own, and it does not reflect any official views of Sanofi.
and as well as Sanofi is not liable for any content or claims which are made during this presentation or communicated throughout this session. So, okay, so the learning objectives of today's session are, see, the entire presentation is divided into 3 parts. First of all, I will guide you regarding the retrospective thinking about the career. Second part will actually focus on the GPAT as well as NIPER preparation strategy, like brief overview of the subjects and the topics which are important. And third thing is the key aspects to focus during those examinations. So during the examination, I mean the time which you are spending, like 2 hours for NIPER, 3 hours for GPAT. So at that time, exactly what needs to be done. Because I have observed many students, like they prepare for years and years during the examination, but for the examination, but during the examination, they fail with the strategies. And due to this lack of planning and strategy, they lose their ranks and they lose. Even you might be knowing, as it is a national level examination. So at least one question also gets you behind 20 to 30 ranks. So that is why strategies during the examination is also important. So I want this session to be interactive. So first of all, I would like to ask students, right? Can anyone reply in the chats or just unmute yourself? So anyone heard about what is retrospective thinking, or does anyone just thought like we should think about the career in retrospective manner? Anyone confirm? If it is you have not heard, then also it is fine. I am there to explain. So just I want to hear that whether does anyone know this concept? Students, you need to speak. It's not, there is no one who is going to judge you here. So this is very important for our pharma professional in corporate world. You need to express your opinions freely. Okay, is that fine? I think I need to get it. Okay, sure. So yeah, so main thing is, see, retrospective thinking is like many third year or fourth year. I will just explain you in a simple concept related to our medicinal chemistry or organic chemistry. Okay, so third year or fourth year B Pharm students might relate that. Whenever you need to synthesize any molecule, what do you do? You first know the structure of the molecule which needs to be synthesized. That is your aim. Okay, so through that structure, you know that this is the product which I need to synthesize, and you know the structure very well. So through that product, you will go one step backward. Like, okay, what will be the raw materials for this? What will be the catalysts which are used for this? What is the reaction conditions which should be used for this? So in the same way, retrospective thinking means you have to you have to move backwards to you know your aim, and then to fulfill that aim, you need to move backwards, like what is required to fulfill that aim. So that is my meaning of retrospective thinking. So first of all, like successful career. See, right now, just I told you, right? Everyone will be dreaming to have a successful career. So for that, what you need to be successful in corporate. Okay. Just I'm telling you, like it is an example. If we move towards the corporate section, so that is the example. Like for becoming successful in career, you need to be successful in corporate. Next thing, for this, what you will be having, if the students since this webinar is focused on GPAT as well as NIPER J, so I will take this path as the performance at NIPER. So actually, the success in corporate is related to the performance at NIPER. How is your performance at NIPER? How do you spend those 2 years of the research in NIPER? That actually determines your success in corporate, and that actually drives your career. That actually drives your successful career. So for performing at NIPER, what do you need? You need to qualify GPAT as well as NIPER J with good ranks. Okay, and for this, for GPAT and NIPER J, what do you need? You need to have a thorough base in your graduation. So you need to be so see, you can see, students, you can see, for having a successful career in later part of the of your life, so the path is actually traced back towards the graduation days. So students, my message is like you don't think like okay industry में जाएंगे फिर बाद में हम कर लेंगे सब कुछ हो जाएगा.
It is not like that. All the days from the graduation days, what is your attitude in your studies in your graduation days, that actually is dependent upon your success in the corporate. That actually I believe. So I will just decode the pathway, like for each segment of this whole flow chart, what is the domain, or what things are specific to this thing. So for this path, like corporate success to successful career, it is domain specific. For example, what do I mean by domain specific is, so some students might be in the medical writing, some might be in the data analysis, some might be in the analytical R&D, formulation R&D. So this path is going to be specific to each domain. So that is why I mean by domain specific. Then performance for NIPER to this corporate success, it is specific for NIPERians, as you can see by the title. Now, from days of the graduation to the GPAT and NIPER JEE qualification. So this is generic. So generic, I mean, this is generic to all the BPharm students, because right now you are in BPharm, you don't have any specialization. So this path is common to all of you, and specificity starts from here. Okay. Now I'm going to decode that two lines, like from graduation to GPAT and NIPER JEE. Our lecture focuses totally on this segment. Yeah. So what do you need for qualification of GPAT and NIPER JEE? It is actually a function of dedication. So first of all, like how much you are dedicated since entire 4 years. I hope first year students are also listening to my presentation, as well as second, third and fourth year also. So how much you are dedicated in your BPharm studies right from the first year, that is actually dependent. That is actually function. Next thing is, like you might be knowing, it is a knowledge. Knowledge is a common thing. You must have a knowledge to crack this national level examinations. Third thing is the application of knowledge. So mind you students, usually this application part, many students actually fail in the application of the knowledge. They have the dedication, they have the knowledge also, but they fail to apply. And that is the thing which we don't want in corporate, specifically in multinational giants. We need problem solving abilities. We need the application of the knowledge. Even if you have the knowledge, but you are not able to apply, then that is not good. Okay. Then analytical thinking. Analytical thinking is same as like problem solving, because see, when you are moving into corporate in further, so you will be having many problems in this thing. So how much dealing with the problems, how you deal with the problems, how you solve the problems, how actually you perform, or how actually you represent yourself as a problem solver in the corporate, that is actually dependent on of this. And this entire thing is multiplied by passion. So how much passion you have in each things, that actually determines your success in GPAT and NIPER JEE. And students, now you might have failed, like why this examination? See, I'm telling you this, in corporate, all these strategies are important. You must have knowledge, application, analytical thinking, dedication, and that all these things are tested in the GPAT and NIPER JEE exams. So you can say like why this GPAT as well as NIPER JEE is act as a filter. And that is why like many multinational giants who rule the world, we actually want the students who are like from the tier 1 institutes, or we want the students who are like qualified GPAT as well as NIPER JEE. Because why? Because right from the BPharm stage only, students are filtered for all these things. So it is obvious that those who qualify with qualify these two examinations, these two highly competitive examinations, they are actually having all these qualities, and which are needed in the corporate. So that is the reason, like why you need to study or why you need to focus to develop such kind of things. Okay, so this is the part of graduation. So this slide is actually entirely on the last segment, like from the graduation days to the GPAT and NIPER JEE. Okay, so as you might have, this is just one informal slide which I would like to emphasize here. Like you might be hearing about my profile as Amit sir has introduced. You might have right now, since this 5 to 10 minutes of my initial presentation, you might have felt like you need to study. So it is there. You need to study. But the thing is, after you come to the NIPER, when you come into NIPER, that time also you need to study. But the thing is, it is not only studies. Okay, and NIPER life is all about the enjoyment also. It is all about the balancing. So you need to learn how you are balancing your studies and your research with your personal life. So you can say like कि during those BPharm 4 years आप मेहनत कर लो, सब कुछ अपना जी जान लगा दो पढ़ाई करने में, लेकिन बाद में after you are just filtering out those main
big section of this 2 examination, then you are like, you can actually balance both the things, so that you can enjoy also as well as you can study your research also. I'm not telling that you don't focus on the study. So you can see from this my glimpse of my NIPER life, like I also enjoyed my NIPER life as well. So that is the thing which I wanted to convey to the students. Okay, so one of the important part of this my entire or my career is my success pillar. It is Professor Shankar K. Guchait, who was my research supervisor at NIPER SS Nagar, as well as my guide or my mentor throughout my life. So he always says that a person shouldn't be just research oriented, but he should be skilled in overall aspects. So that is what I conveyed in my previous slide. So you just don't have to study at NIPER. You always have to be skilled in the overall aspects also. And here the overall aspects means the communication, the leadership, the management skills, then how you handle people, how you solve the problem. So everything should be related. I have seen many students in NIPER who are just focusing on the research, or they are just sitting in the lab for lab, and they are just doing with their calculation. And even if I ask them what is your friend's project, then they are not able to tell. So that is the thing that shouldn't be there. And even they are not able to communicate also sometimes. So it is the thing, like that is why he always used to say to the students, like you shouldn't just be research oriented, but you should be focusing on overall aspects. And that is the essence of NIPER, which actually tells the students, like NIPER not only prepares the students for studies or research, NIPER actually prepares the students for becoming a good or the best pharma professional or the leader in the pharmaceutical industry. That I will come to that point in my final words. Okay, so this 2-3 slides are actually tailor-made for the first year B.Pharm students, like for them who just enter the pharma field, and they might not be knowing like what is NIPER. So it is very basic from them. So NIPERs are known as the National Institutes of Pharmaceutical Education and Research. They are established by Government of India through the Act of Parliament. So here you might be knowing, just for giving the examples, like you have IITs and NITs and IIMs. Okay, so these are the national level institutions. IITs and NITs are for the engineering, and IIMs are for the management, Indian Institute of Management. So the same thing, we have the NIPERs for pharmacy. So it is known as like IITs for pharma profession. So that is the thing, if I say it in the simple words. Then what is the objective? Objective is to produce a valuable human resource and leadership for the pharmaceutical industry. So that is the major objective of the Government of India in establishing this NIPER. So NIPER actually functions under the Department of Pharmaceuticals, that is known as DOP, under the Ministry of Chemicals and Fertilizers. And you all might be knowing, first NIPER was established in Mohali at 1998, and later on 6 more NIPERs are established into this 6 locations in India. So now you might be having the questions, what are the benefits of getting NIPER? See, every question should have one why. मतलब तुम सब जो कुछ भी कर रहे हो, मैं अभी बोलूंगा 1 घंटा की ये प्रिपरेशन करो, ये करो, वो करो, इस तरह से करो, बट आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस एंड व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग दिस. अगर आपके पास अगर व्हाई का जवाब होगा तो आप हमेशा कर पाओगे. So that is my objective in today's preparation, that why there are benefits of getting, why you want to prepare for NIPER. So you can see that by the first pick, that is the topmost pharmaceutical research institute in the world, not in India, in the world. Okay, so just I am specific towards the NIPER SS Nagar. I know other NIPER are also equally functioning well. So, but since it is my institute, I am just focusing on this thing. Like you can see that NIPER Mohali has been ranked as 64th in the QS World University rankings, and it is ranked 11th in the Asia, and it is ranked number 1 in the India in the QS World University ranking. So that is the thing, like you have almost top 2% of scientists in the rank by Stanford University. They are your faculties in NIPER. You are actually studying from them. So that is the thing, like why such personality develops after cracking NIPER or after getting into NIPER. So that is the main reason. And now coming about the faculties, as I have told you, that they are almost around the top 2% of scientists which are ranked by Stanford University. Also, you can see many achievements, like they are ranked like CRSI bronze medal, CRSI, many faculties have been ranked. Eli Lilly Outstanding Thesis Award.
So all such kind of faculty achievements are there in this thing. So, and one of our scientists, Professor Sayog Jain, he's actually been selected as a fellow of AAPS, American Association of Pharmaceutical Scientists. So that is actually the major thing. Like all the faculties are actually ranked, and they are like, they have the capabilities, or they have the value in the world. It is not only in India. And you can see the third thing, that is for the placement record. Many students, majority of the students, I will say, so right from the BPharm, they are going to focus on the third aspect only, that is excellent placement record. So you can see all the past recruiters, all of our NIPER Mohali recruiters, or any NIPER recruiters. They are, you can see by the pick that they are the giants. They are giants in either they are giants in the pharmaceutical industry, or they are the consultants. They are giant in IT industries. Okay. Now just focusing like what are the programs which are available at NIPER. So it MS Pharm, M Pharm and MTech Pharm is available, as well as MBA Pharm is available. So as well as medical devices courses are available. So all these things, these are the picks taken from the information or the placement brochure of NIPER. And so the regarding the stipend is like you will be getting rupees 12,400 per month from DOP for MS, MTech and MPharm courses. And for MBA courses, you have the stipend for top 3 performing students for each semester, and these are funded by the institute. So MBA stipend is funded from the institute, and MS, MPharm and MTech stipend is funded by Government of India directly from the ministry, the Department of Pharmaceuticals. Yeah. So now goal setting for institute and branches. So I would like to give here a note that students, please focus this slide very clearly, because this is the slide which is actually needed right from the first year, or even if you are in the third or fourth year. You must know how to set your goal, and that is the thing which I have done from the first year. So I have done this thing. That is why I was around the all India rank of 30 in general category, as well as of 57 in the entire examination. Hello, sir. Yeah. Sorry to interrupting you. Can you please explain in both language, like Hindi and English? Okay. Students asking. Sure. Yeah, maybe. Yeah. So देखिए कि गोल सेटिंग किस तरह से करना है, ये मेजर थिंग है. ये मुझे फर्स्ट ईयर से ही पता था, इस वजह से दैट इज व्हाई आई एम हियर. मैं इस वजह से मैं आज हूँ इधर आपके सामने. सो सी, अभी क्या होगा, आपको इंफॉर्मेशन ब्राउजर में अभी ये 2022 और 23 एकेडमिक ईयर का है. इट इज द लेटेस्ट ईयर आल्सो, दे आर चेंजिंग बट इट इज सेम मोस्टली. So you will be having like for NIPER Mohali, I'm telling you, like this medicinal chemistry had 27 seats, TM had 5, pharmaceutics had 23, biotechnology has 30. So this is like a seat matrix for one institute. Like if NIPER SS Nagar you are targeting, you might be targeting Ahmedabad also. For that NIPER Ahmedabad, you can check the NIPER Ahmedabad seat matrix. अभी क्या है, अभी ये ब्रोशर में होगा कि टोटल सीट्स इन द डिपार्टमेंट. अभी ये टोटल सीट्स है. फॉर एग्जांपल इफ यू नीड, लाइक आपको अगर चाहिए मेडिसिनल केमिस्ट्री एट नाइपर मोहाली, ओके, सो टोटल सीट्स आर 27. नाउ आपका जब काउंसलिंग होगा ना, तो काउंसलिंग के टाइम एक और सीट मैट्रिक्स आएगी, एंड दैट इज एक्चुअली द बाइफर्केशन ऑफ दिस टोटल सीट्स इनटू वेरियस कैटेगरीज. तो आप समझ रहे हैं बात को. 27 सीट्स आर इन मेडिसिनल केमिस्ट्री फॉर नाइपर एसएस नगर फॉर एकेडमिक ईयर 2022, एंड नाउ ड्यूरिंग द काउंसलिंग आपके पास एक सीट मैट्रिक्स आएगा जिसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री या हर एक ब्रांचेस का जो सीट्स है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, उसको बाइफर्केट किया जाएगा. यानी 27 सीट्स इन मेडिसिनल केमिस्ट्री इज बाइफर्केटेड इनटू 9 सीट्स फॉर जनरल, 6 फॉर ओबीसी, 3 फॉर एससी, 2 फॉर एसटी एंड ईडब्ल्यूएस is 2 and PH is 0. So, and these are actually sorry, this is like a Ahmedabad side here, if you can see 11, 7, 4, 2, 3, 1 and total is 28. Yeah. So अभी देखिए आगे, अगर if you are in general category, okay, just I'm explaining for one category. If you are a general category student, you need MS Pharm in medicinal chemistry at NIPER Mohali for year 2022. So students feel like कि okay, ये 27 सीट्स है, तो मुझे 27 सीट्स के हिसाब से मुझे तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है. बट इट इज नॉट लाइक दैट. ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ. इट इज नॉट लाइक दैट. द NIPER JEE counseling, it happens according to your categories. Like OBC category will be different, ST will be different, ST will be different and general will be different. तो आप देखेंगे 27 सीट में से जनरल के लिए 11 सीट्स है in medicinal chemistry. So you need to fight for 11 seats. You don't need to fight for 27 seats. So
तो इस वजह से इधर कैटेगरी बेस्ड रैंकिंग होता है, तो कैटेगरी बेस्ड रैंकिंग से सर दैट इज व्हाई आई हैव सेड लाइक ऑल इंडिया रैंकिंग इंपॉर्टेंट है टोटल भी, लेकिन कैटेगरी बेस्ड रैंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल इफ आई कैन से लाइक I wanted core branches in NIPER Mohali, okay, during my time, during 2020 time. तो मेरे कोर ब्रांचेस की सीट मुझे चाहिए थी, मेडिसिनल केमिस्ट्री चाहिए था, एनालिसिस चाहिए था, कोलॉजी और स्यूटिक्स. मेरे को 4 ब्रांचेस चाहिए नाइपर मोहाली में, एंड दैट वाज माय एम फर्स्ट ईयर, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर. सो चारों ब्रांचेस का अगर मैं टोटल करूंगा तो मेरे पास 42 सीट थी जनरल कैटेगरी. सो मेरा गोल पहले से ही सेट था कि आई नीड टू फाइट फॉर दिस 42 सीट्स, 44 सीट्स आफ्टर व्हेन आई रीच द फोर्थ ईयर. क्योंकि मुझे ब्रांच में स्पेसिफिसिटी नहीं थी, मुझे कोर और नॉन कोर में स्पेसिफिसिटी थी उस टाइम पे. मुझे चारों ब्रांचेस में से कुछ भी ब्रांच चल जाता था. चारों कोर में से मुझे चारों सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था. फॉर रिसर्च एक्सपर्टीज मुझे इंटरेस्ट था सब में. सो द थिंग इज कि मुझे 44 सीट्स के लिए फाइट करना था. नॉट आई हैव नॉट टू फाइट फॉर दिस ऑल टोटल लाइक 27 प्लस this thing 9 plus 23 इतने सीट्स के लिए नहीं फाइट करना था, ओनली 44 सीट्स के लिए फाइट करना था. सो दैट इज द रीजन. नाउ यू लिसन पेशेंटली. अभी मेरा ऑल इंडिया रैंक था 57 टोटल है, पूरा मतलब एग्जामिनेशन में फुल रैंक मेरा 57 था. अब मेरा कैटेगरी रैंक था 30. ओके, सो अभी आप देखिए मेरा ऑल इंडिया रैंक 57 होता और मेरा जनरल कैटेगरी रैंक अगर मेरा 45 होता तो मुझे कोई भी ब्रांचेस नहीं मिलती. Is that fine? Am I clear? I want the responses from student also here. Can anyone just ping in chats or just tell that is it clear? Friends, I want interaction. I have already communicated to you that this kind of interaction and proactiveness is actually we look for the when we actually hire candidates, we look for such things like how much students are proactive or that much. Yes, students, kindly answer the question. Most of the students are share answer in our chat box that yes, understood. Okay, that is fine. Yeah, great. So मैं अगेन reiterating 57 ऑल इंडिया रैंक है, बट जनरल कैटेगरी रैंक अगर मेरा 44 से नीचे होता, इफ 45 46 अगर होता तो आई माइट नॉट बी श्योर कि मुझे 4 ब्रांच मिलती कि नहीं मिलती. आई वुड बी अगेन डिपेंडेंट ऑन माय मींस मेरे ऊपर के लोगों से कि भाई भला ये अगर ब्रांच अगर छोड़ देगा तो मुझे मिल जाएगा. एंड दैट डिपेंडेंसी शुड नेवर बी देयर. जैसा आपका एग्जामिनेशन का रैंक आएगा यू शुड बी लाइक कि ओके चलो ये ऑल इंडिया रैंक 30 है, सो इट इज लाइक यू विल बी गेटिंग एनी ब्रांचेस हियर. So that you aim for such thing, ताकि बाद में कुछ टेंशन नहीं रहेगा कि भाई सामने वाला अगर छोड़ेगा तो मुझे मिलेगा, ये इसमें रहना ही नहीं. You need to be at the top so that you are actually driving the ranking. So that is main thing. That is the goal setting which is necessary right from the first year. First year से ही आपको क्लियर होना चाहिए, और मुझे ये चीज फर्स्ट ईयर से क्लियर थी, इसलिए मेरी प्रिपरेशन 4 साल तक उस तरह से थी. ओके, नाउ करियर आफ्टर नाइपर. अभी मैं इतना बोल रहा हूँ कि नाइपर जीपैट का प्रिपरेशन क्यों करना चाहिए, मैं इतना बोल रहा हूँ कि लाइक इतने टॉप मोस्ट जायंट्स आते हैं, कंसल्टिंग जायंट्स भी आते हैं, रिसर्च जायंट्स भी आते हैं, फार्मास्यूटिकल जायंट्स भी आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, सब ऐसा ऐसा होता है. लेकिन आफ्टर नाइपर एग्जैक्टली करियर क्या होता है, सो ये बात में. सो the post sniper career path is divided into 2 main segments, that one is the higher studies and another one is the industry. Higher studies means PhDs or postdoctoral studies, and industry means कि कोई industry में रहेगा. So industry में there are 2 segments. One is the research and development, that is the core R&D, and another one is the consulting. So अभी you trust me students, मैं जब नाइपर में प्लेसमेंट से हेड था, so I used to conduct the webinars. I was invited for the guest lectures for my juniors batch. So for delivering like what are the career options after नाइपर. अब अपना टॉपिक क्या है, जीपैट एंड नाइपर जेई के बारे में. अब वो मैं 1 घंटा लूंगा बोलने के लिए, बट नाउ यू ट्रस्ट मी, करियर आफ्टर नाइपर मुझे बोलने के लिए 1-1.5 घंटा लग जाता. मतलब मेरा सेशन ही पूरा सेपरेटली इस स्लाइड पे होता था. मतलब ये स्लाइड पे मेरा पूरा एक लेक्चर होता था. तो यू कैन अज्यूम लाइक कि हाउ डीप इट इज. अभी ये मैंने तो इधर बस सुपरफिशियल दिया है कि R&D एंड कंसल्टिंग. अभी R&D में भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, कंसल्टिंग में भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, हायर स्टडीज में भी इंडिया और अब्रॉड के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं. तो ये जो पूरा फ्लो चार्ट है वो इतना एक्सपांड हो जाता है कि मुझे 1 घंटा पूरा एक सेशन लेना पड़ता है कि व्हाट इज अ पोस्ट स्नाइपर करियर पाथ.
So you can assume like how deep it is and why it is important for preparation. Okay. So अभी मेन पार्ट पे आते हैं लाइक एडमिशन इन नाइपर्स मेजरली सबको तो पता ही होगा बट फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आई विल से लाइक यू फर्स्ट नीड टू क्वालिफाई GPAT and then you need to qualify for NIPER. Okay, so that GPAT qualification is your filter. Now what is NIPER JEE? Okay, so in NIPER JEE मैं पहले ही मैं बोल चुका हूँ कि GPAT qualification is main thing like for pharma students, and for other students it is GATE or NET is also the applicable. So that is needed, and then you are eligible to appear for NIPER examination. और नाइपर एग्जामिनेशन में क्या कैसा पेपर पैटर्न रहेगा? पहले मैं जीपैट का पेपर पैटर्न बोलूंगा. जीपैट का पेपर पैटर्न 125 क्वेश्चंस का रहता है और 125 क्वेश्चंस में each question is a 4 marks and 25% नेगेटिव मार्किंग रहता है. So that means कि 1 mark is a negative marking, which अगर आप एक क्वेश्चन इनकरेक्ट करोगे तो उसमें 1 mark डिडक्ट हो जाएगा एंड टाइम इज 3 hours. नाइपर जेई का पेपर पैटर्न क्या रहता है कि इट इज 200 क्वेश्चंस विद 25% ऑफ नेगेटिव मार्किंग. नेगेटिव मार्किंग सेम है पर each question is of 1 mark. So 1 mark for each 200 question and 0.25 marks are the negative marking. और एग्जाम ड्यूरेशन इधर 2 hours होता है. So you can say like एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको खाली 36 सेकंड है नाइपर जेई में. और जीपैट में कितना है? जीपैट में आपको 3 घंटा मिलेगा 125 सॉल्व करने के. सो यू हैव मोर देन 1 minute, 1.5 minute है आपके पास एक क्वेश्चन पे टाइम लगाने के लिए. लेकिन नाइपर जेई में आपके पास खाली 36 सेकंड है एक क्वेश्चन का ढूंढने के लिए या एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के लिए. सो दैट इज द मेजर थिंग कि व्हाई द डिफरेंस और व्हाई सब प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल थिंकिंग, सब कुछ, हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, ये सभी चीज ये नाइपर जेई में आ जाती है. एंड यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग राइट फ्रॉम द एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन के दिन से आपको स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है वो आपको मालूम पड़ जाता है. तो आगे दैट इज द सच काइंड ऑफ पर्संस आर एक्चुअली नीडेड इन कॉर्पोरेट. ओके, सो अभी मैं पूरा मेन अपना सब्जेक्ट्स पे फोकस करूंगा like a brief overview of the subjects, like कि क्या है नाइपर जेई और नाइपर जेई के फार्मा as well as नॉन फार्मा सब्जेक्ट्स क्या होते हैं. एंड ड्यूरिंग माय ईच स्लाइड मैं आपको डिफरेंसेस भी बताते जाऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट जीपैट में. यस, इज एनीवन Any query? Yes, Yeah. students, any query? I think no, sir. You can continue. Yeah, we can take the Q&A session at the last one. Yeah, okay. So मैं each जैसे मैं एक सब्जेक्ट डिस्कस करता जाऊंगा तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि what is like what kind of topics in these subjects are equally important for GPAT as well as what are the differences between GPAT and NIPER JEE in each topic. So अभी मेन कॉन्सेंट्रेट करते हैं फार्मा एज वेल एज नॉन फार्मा सब्जेक्ट्स पे. तो पहले आई विल गो टू द नॉन फार्मा सब्जेक्ट. सो आपके पूरे पेपर में ना अराउंड 15% ऑफ द क्वेश्चंस रहेंगे वो नॉन फार्मा सब्जेक्ट्स के होंगे और बाकी का पूरा जो बचेगा अराउंड 85% वो पूरा फार्मा सब्जेक्ट्स होंगे. नाइपर में, जीपैट में नॉन फार्मा सब्जेक्ट्स आता ही नहीं है. इट इज लाइक होल पेपर इज फॉर द फार्मा. अभी नॉन फार्मा सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग आता है, बायोस्टैटिस्टिक्स आता है, करंट अफेयर्स आ जाता है, इंग्लिश ग्रामर एंड यूएसएफडी अप्रूव्ड ड्रग्स एंड नोबेल लॉरेट्स आ जाते हैं. So biostatistics is actually, you are actually lucky, you guys are lucky because you are studying the newly approved PCI syllabus. During our time like 2016 to 2020 हमारे पास PCI syllabus हुआ नहीं करता था तो उसमें biostatistics ज्यादा included नहीं होता था. तो हम लोग को मुझे बाहर से biostatistics पढ़ना पड़ा. Like I have to use internet sources to understand and what are the things. आप लोग के syllabus में ही biostatistics है. So you are lucky in that case. So and then you need to have current affairs like कि currently क्या क्या चीजें हो रही है वर्ल्ड में. तो उसका थोड़ा सा it is like a general knowledge kind of thing. And then English grammar, like generally convert active into passive, convert direct into indirect speech, articles a and ये सब चीजें. And USFDA approved drugs, here I would like to focus. This is like a important part in non-pharma subjects. ज्यादा questions इसमें से पूछे जाते हैं. If you are preparing for NIPER JEE of 2025, then आपको पिछले 2 साल के यूएसएफडीए अप्रूव्ड ड्रग्स को के बारे में पता होना चाहिए. और यूएसएफडीए ड्रग्स के बारे में पता होना है नहीं सब कुछ नहीं, आपको पता होना चाहिए कि विच इज द कंपनी हु हैज मैन्युफैक्चर और मार्केटेड दिस, व्हाट इज द मैकेनिज्म एक्शन एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द मॉलिक्यूल. ओके, उस तरह के. सो पास्ट 2-3 इयर्स के जरा देख के जाना यूएसएफडीए अप्रूव्ड ड्रग्स कौन से. So this is the part of non-pharma subjects. Or mind you, if you need to excel in this NIPER JEE, or if you need to qualify with a great all India rank,
देन आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है. यू नीड टू फोकस ऑन नॉन फार्मा पार्ट आल्सो, क्योंकि एक क्वेश्चन से ही आप 10-20 रैंक पीछे चले जाओगे, इतनी कंपटीशन बढ़ चुकी है अभी तो. So now coming on to the main part, that is the pharma subject. So pharma subjects में ना मैंने अराउंड इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. So one is the pharmaceutical chemistry. So pharmaceutical chemistry में organic, analytical, medicinal and physical chemistry आएगा. Pharmaceutics में physical pharmacy, unit operations, posology, industrial pharmacy and biopharmaceutics. Pharmacology में general pharmacology, ANS, CVS, CNS, chemotherapy as well as endocrine. So these are all the drugs acting on the various therapy areas, and natural products and biochemistry, biotechnology and microbiology. ये दो part I will cover in the subsequent slides. Yeah. So I would like to tell the students like this chart is not like I have self-prepared this chart. It is not available like in any from the reference book or I have done. And this chart I have prepared in my first year, that is in 2016. So what is the benefits of this thing? Like it also ये भी goal setting के अंदर ही आता है. See, if I am noting all the subjects, if I am categorizing all, then I can track my preparations. For example, in pharmaceutics part, if I have completed industrial pharmacy, then I can track it. That industrial pharmacy is completed and unit operation बाकी रह गया revision करना. And if unit operation is completed, then okay, the biopharmaceutics बाकी रह गया. So that is important कि इतना मतलब कि किस तरह से चार्ट बना के आपको अपना प्रिपरेशन ट्रैक करना चाहिए right from the first year. तो अगर आप ट्रैक करोगे तो ही आप कर पाओगे कि आपका प्रोग्रेस कितना है और क्या वेयर यू आर लैकिंग ऑल दिस थिंग्स. ओके, नाउ मैं क्या करने वाला हूँ कि पूरे प्रेजेंटेशन में हर एक सब्जेक्ट का एक ब्रीफ ओवरव्यू देने वाला हूँ. सो दिस इज लाइक अ मैप फॉर सेक्शन नंबर 2, लाइक सेक्शन नंबर 2 ऑफ माय प्रेजेंटेशन. ये पूरा एक रोड मैप है एंड आई विल एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ दिस फ्लो चार्ट इनसाइड दिस. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अभी स्टूडेंट्स को मैं ये फोकस करना चाहूंगा कि द फंडामेंटल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप फंडामेंटल्स से आपका क्लियर होगे तो आप एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ पाओगे. और एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री. मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी आगे बेसिक और एडवांस वो भी आ जाता है. तो मेजर थिंग इज लाइक अ फंडामेंटल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अगर आप यहाँ से क्लियर नहीं होगे तो आप आगे सफर करने वाले हो, एंड आगे सफर करेंगे इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस एज वेल एज इन GPAT as well as in NIPER JEE. So fundamentals से क्लियर रहना चाहिए. अभी फंडामेंटल सेक्शन में क्या आएगा? इट इज लाइक केमिकल बॉन्ड्स, लाइक टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, देन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट्स, रेजोनेंस एंड बेसिक रिएक्शंस. अभी मैं एक जस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा जितना मुझे मेरे 4 साल पुराने हिसाब से मुझे याद है उससे. अभी मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि hyperconjugation, like you might be knowing, like this hyperconjugation is also known as the no bond resonance. Okay, अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा नाइपर जेई में और या फिर GPAT में. एक तुम लोग को कोई फिनोमेना दिया जाएगा कि स्टार्टिंग मटेरियल दिया जाएगा, एंडिंग चीज है, एक फिनोमेना दिया जाएगा या इंटरमीडिएट दिया जाएगा हर एक चीज में, और ये इफेक्ट दिया जाएगा, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा. ओके, बट वो क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेंगे. वो क्वेश्चन पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग options is which of the following things are no bond resonance. तो ऑप्शंस आएंगे A B C D. तो आपको चेक करना है कि किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा है उस केस में. लेकिन स्टूडेंट्स को पता है हाइपर कॉन्जुगेशन है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस. सो मैंने पहले ही बोला है कि दिस 2 एग्जामिनेशंस आर हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. स्टूडेंट्स को पूरा एकदम फिल्टर करके लेना पड़ता है आगे भी, और इसी वजह से ये एग्जामिनेशन उतनी टफ तो रहने ही वाली है. सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि टफ रहने वाली इन द सेंस इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस देन आपके लिए टफ नहीं होगी. सो यू नीड टू गो लिटिल बिट बियॉन्ड दिस थिंग. और आपको ही आपका सोचना है कि मैं खुद कैसे क्वेश्चंस को, पेपर्स को ट्विस्ट कर पाऊंगा उस हिसाब से. नाउ यू नो student is familiar with hyperconjugation, but he doesn't know the same fact, like it is also known as no bond resonance. So ये मेन प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्टूडेंट सफर होते हैं, ये मैंने देखा है. देन नेक्स्ट थिंग इज द बेसिक रिएक्शंस. बेसिक रिएक्शंस में क्या क्या चीजें आ सकती है? इफ लाइक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सो ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स आर द बेसिक रिएक्शंस. सो ये बेसिक रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या है कि किस तरह से प्रोग्रेस होती है, क्या क्या उसके एग्जांपल्स है, फिर क्या क्या उसका मतलब चीज है कि लाइक इन अल्केन्स में क्या आएगी, अल्किन्स में क्या आएगी, अल्काइंस में क्या आएगी, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी क्या सब आएगा. ये सब कुछ भी आपको देखना पड़ेगा कि
क्योंकि इसी वजह से आप बेसिक अगर क्लियर रखोगे तो आगे एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आऊंगा एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, दैट इज द नेम्ड रिएक्शंस। अभी नेम्ड रिएक्शंस क्या क्या है? फॉर एग्जांपल इफ आई कैन टेल few of the example, it is like a Clemmenson reduction, Wolff-Kishner reduction, Kolbe-Smith synthesis, Reimer-Timer reactions. So all these are the named reactions which are actually discovered by some of the scientists. अभी आपको अगर बेसिक रिएक्शंस नहीं मालूम होंगे तो आपको नेम्ड रिएक्शंस भी याद करने का मुश्किल हो जाएगा और समझने का भी मुश्किल हो जाएगा। I can say that याद करना is a wrong terminology. I can say समझना is a right terminology. You will not be able to understand the named reactions because क्यों? उसका रीजन है क्योंकि आपके नेम्ड रिएक्शंस में कोई ना कोई बेसिक रिएक्शंस तो आ ही जाती है। फॉर एग्जांपल कोई अगर नेम्ड रिएक्शंस होगी XYZ कोल्बे-स्मिथ सिंथेसिस, तो उसमें या तो कोई ना कोई एक बेसिक रिएक्शंस आ जाएगा कि दिस स्टेप इन्वॉल्व द लाइक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और दिस स्टेप इन्वॉल्व द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लाइक उस केस में वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन में भी मेन कोई बेसिक रिएक्शन आ चुकी है उस तरीके से। So that is the reason, like you need to study basic reactions also and then you can go on towards the named reaction. Now next thing is like aromaticity, like you might be knowing like Huckel's rule, like pi electrons, number of pi electrons should be 4n plus 2. But अभी मेरे टाइम पे क्या पूछा गया था? एक क्वेश्चन पूछा था which of the following compound is anti aromatic. नाइपर में पूछा गया था। स्टूडेंट डोंट नो व्हाट इज द एंटी एरोमेटिक उस टाइम में, लाइक दे आर नॉट अवेयर, लाइक कि 4n इलेक्ट्रॉन्स अगर दिखे और 4-5 जो कंडीशन है, 3 कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं किए तो इट इज नोन एज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। So students only know like aromaticity, but they don't know what is anti-aromaticity. So उसमें भी aromaticity, anti-aromaticity सब कुछ आ जाएगा। Then स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको कॉन्फ़िगरेशंस याद रखना है कि E and Z क्या होता है, R and S नोमेनक्लेचर क्या होता है, D and L क्या होता है, उन हर एक नोमेनक्लेचर में डिफरेंस क्या क्या होता है, और सब कुछ आपको याद रखना है। Understand, you need to understand on this. Then pericyclic reactions and ester hydrolysis. I can tell that these two reactions are important for NIPER J, more of the things. ये जो इतना पार्ट है वो GPAT and NIPER में कॉमन है, एक्सेप्ट पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस एंड एस्टर हाइड्रोलिसिस तो जनरली नाइपर में ही पूछा जाता है। इट इज लाइक 8 रिएक्शंस, 8 मैकेनिज्म ऑफ द एस्टर हाइड्रोलिसिस। सो ये आपको जेरी मार्च से मिल जाएगा। आई विल कम टू द रेफरेंस बुक सेक्शन एट द लास्ट उस टाइम में। सो स्टडी एस्टर हाइड्रोलिसिस फ्रॉम जेरी मार्च। There are going to be sure short questions in the NIPER J for ester hydrolysis. Yeah. Now next subject is the pharmaceutical analysis. Pharmaceutical analysis यानी मेरे first flow chart में analytical chemistry लिखा था वही आता था, क्योंकि analytical chemistry is the basic for pharmaceutical analysis. अभी pharmaceutical analysis में majorly 2 parts में मैंने divide किया था कि one is the spectroscopy and another one is the chromatography. ये 2 चीजें ही ज्यादा GPAT as well as NIPER में पूछी जाती है। Spectroscopy में like UV visible, NMR, IR and mass. क्रोमेटोग्राफी में HPLC, GC एंड HPLC। सो ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी एज वेल एज क्रोमेटोग्राफी में आपको कॉमन क्या है? सो आपको क्या पढ़ना है? सो यू नीड टू स्टडी प्रिंसिपल, यू नीड टू स्टडी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड यू नीड टू लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इन दिस थिंग इज नेसेसरी। लाइक कि यूवी विजिबल का क्या प्रिंसिपल है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ NMR, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मास, what are separate ionization techniques and what is gyromagnetic ratio in NMR, all these things will be coming. Okay, what is lambda max in UV visible spectroscopy? So all these things. So उसका इंस्ट्रूमेंटेशन, हर एक इंस्ट्रूमेंट ही होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी की, these are the instrumental methods of analysis. So उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन आएगा। So what is the instrumentation? And then problem solving in the case आपको questions ऐसा पूछे जाएंगे कि एक कंपाउंड दिया जाएगा, for example if it is a mass spectrometry question, then एक कंपाउंड दिया जाएगा, आपको आयनाइजेशन टेक्निक लिखी जाएगी कि ये आयनाइजेशन टेक्निक से यूज किया है स्पेक्ट्रोमीटर, तो अभी आप उसका फ्रेगमेंटेशन निकालिए कि फ्रेगमेंटेशन पैटर्न क्या हो सकता है। सो दैट इज लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्विंग हियर। यूवी विजिबल में आपको याद होगा कि वुडवर्ड-फाइजर रूल रहता है अकॉर्डिंग टू गेट और टू प्रेडिक्ट द लैम्डा मैक्स वैल्यू ऑफ एनी कंपाउंड। सो उस केस में सो दैट इज लाइक दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी कमिंग लाइक सो उस केस में। And then coming on to the miscellaneous methods like XRD, AS, AES and ORD-CD. XRD is nothing like, it is a X-ray diffraction spectrophotometry. Then AS is like a atomic absorption spectrometry and AES is a atomic emission spectrometry. And ORD and CD, optical rotary dispersion and circular dichroism. So ये सब methods miscellaneous है. It is like it carries less weightage but you need to study because anytime we are not aware, 1 or 2 question might be there.
एंड इन द टाइट्रेशन यू स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को हम तो अब तक टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो टाइट्रेशन का कुछ नहीं आ रहा है क्या? So I will not tell that titration का आता नहीं है, but it is like very less chances because titration is not majorly now used in the industry for analytical development laboratories or analytical research. Mostly आपको spectroscopy और chromatography ही use किया जाएगा. So that is why the questions are based for this GPAT as well as in NIPER. और ये pharmaceutical analysis GPAT और NIPER में common रहेगा. ये जो मैंने syllabus बोला है उसमें सभी आएंगे. एंड टाइट्रेशन में से आपको जेल्डल और कार्ल फिशर मेथड आपको जरा मतलब फोकस करना है, क्योंकि ये ज्यादा पूछा रहता है दोनों में. एंड टीजीए, डीटीए एंड टीएससी ये सारे टेक्निक्स भी पूछे रहते हैं. बिकॉज इन नाइपर नो माय फार्मास्यूटिक्स पर्सनल्स और फार्मास्यूटिक्स फ्रेंड्स दे एक्चुअली यूज डीएससी, डिफरेंशियल स्कैनिंग कलरोमेट्री, टू एनालाइज द स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन. सो ये एक आपको हिंट मिल जाएगी कि आपको अगर नाइपर में जो चीजें करंटली हो रही है, जो इंस्ट्रूमेंटेशन है करंटली, जो चीज एक्चुअली रिसर्च के लिए यूज हो रही है, वो क्वेश्चंस आपको आने वाले. सो दैट इज व्हाई दिस टीजीए, डीटीए एंड मेजर डीएससी इज बीन आस्क्ड इन नाइपर जेईई. नेक्स्ट कमिंग टू द मेडिसिनल केमिस्ट्री, आई विल अगेन रीआइटरेट कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम ध्यान से करोगे तो ही आप मेडिसिनल केमिस्ट्री कर पाओगे. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक देन एडवांस, देन मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी सेम थिंग, इट इज लाइक अ बेसिक एंड एडवांस. सो नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक अगर आप याद रखोगे, स्पेशली द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये मैं पॉइंट आई थिंक आई मिस दिस पॉइंट इन द प्रीवियस सेक्शन. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का भी एक पॉइंट रहेगा आपको द एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बिकॉज यू माइट बी नोइंग ऑल द ड्रग्स आर द मेजरली दे आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड दे आर हेट्रोसाइक्ल्स. मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें सिंपल अल्केन अल्किन तो आता ही नहीं है. मोस्टली उसमें मतलब सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ही रहते हैं. लाइक इमिडाजोल कोई रिंग होगी, पायराजोल रिंग होगी, पिरिडीन रिंग होगी, प्यूरिन रिंग होगी, कुछ ना कुछ तो. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू फोकस ऑन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड देयर सिंथेसिस एंड देयर रिएक्शंस, क्योंकि वो जो रिएक्शन होंगे वो मेडिसिनल केमिस्ट्री के सिंथेसिस में याद आएंगे आगे. सो कमिंग टू द बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री, सो बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री में मेजरली क्या कवर होता है? व्हाई आई नेम इट एज बेसिक? because these are the properties which are listed here. They are actually these properties actually play a role in predicting the behavior of the drug in the body, in our body, or the pharmacological action of the drug. So it is known as the physicochemical properties of the drugs which affect the pharmacological action of the drugs in the body. So that is the main motto, like here in basic medicinal chemistry. So उसमें क्या आएगा? Solubility, partition coefficient, bioisosterism, isomerism, then forces of drug receptor interaction, then Lipinski rules of 5. So ये सभी चीज को आपको एकदम you have to be crystal clear in all this kind of topics. So अगर ये आपको clear होगा, then only you will be able to study or you will be able to predict what kind of the absorption is there, कैसा उसका distribution रहेगा. If ये रहता है कि the VD of some drug XYZ is low, so आपका इसमें reason क्या है? तो reason might be few anything from this here. So that is the main importance. So अभी drugs acting on the TS like therapeutic area. TS means therapeutic areas. So उसमें क्या आएगा कि अब second जो part होगा आपका medicinal chemistry का, that is actually similar to the pharmacology which I will cover in the later slides. So drugs acting on TS, for example, अगर आप CNS के drugs पढ़ रहे होगे, central nervous system. So drugs acting on central nervous system में आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना होगा उसका classification, then what is the mechanism action, then what is the structure activity relationship, सिंथेसिस एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म. अभी सार जो टॉपिक है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, टू माय फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आई विल टेल कि देखिए कोई भी ड्रग्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है और उसकी जो बायो एक्टिविटी है या उसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो फंक्शन है उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा. बिकॉज दैट स्ट्रक्चर जो होगा ड्रग का वही अपने बायोमोलिक्यूल्स यानी कि अपने रिसेप्टर के साथ या अपने एंजाइम के साथ वो इंटरेक्ट करेगा. So अगर आप स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंज करोगे तो बायो एक्टिविटी में कैसे चेंज आना है? So that is the meaning of SAR, that is structure and the activity relationship. In medicinal chemistry in the research phase, हम भी खुद जो हम नाइपर में जब MS करते हैं PhD या फिर some students go for PhD, we actually focus on the SAR, like what is the structure activity relationship of any our molecule, कि ये रिंग है and that is the basis of synthesis. आप मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज क्यों करोगे? अगर आपको ये स्ट्रक्चर आपको अगर मॉलिक्यूल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लाना है तो आपको क्यों लाओगे? So that is actually that is the answer, like why is the answer in the structure activity relationship. That is hydroxyl group is actually essential in forming the hydrogen bond with the amino acids of the receptors. So उस केस में रहेगा.
Then synthesis and the drug metabolism. Then कोई drugs जो होते हैं, for example these are the prodrugs, so उसका metabolism रहता है कि it is like कि पहले inactive रहता है, body में जाके in vivo जाके वो active molecule में convert होता है, and then how it gets metabolized. For example, one famous example I can tell you, first year student भी relate कर पाएंगे, that metabolism of paracetamol. So it actually like last में जो product convert होता है, it is like a NABPQI. So okay, so ये जो पूरा paracetamol का, that is a toxic metabolite of the paracetamol, and उसको इसलिए paracetamol poisoning में what is the antidote, and antidote is the N-acetylcysteine जो भी है वो. So that is the main part in the drug metabolism. तो ये आपको सारे मतलब पढ़ना पड़ेगा कि ध्यान रखना पड़ेगा in specific some molecules. Okay, then ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कॉमन है GPAT as well as NIPER JEE के लिए, दोनों के लिए. अभी स्पेसिफिक टू NIPER JEE में मैं आता हूँ. सो इन NIPER JEE में तो ये भी पूछा ही जाएगा सभी चीज में भी, पर ज्यादा फोकस इसमें QSAR एंड CAD में किया जाएगा इन NIPER JEE, because in NIPER JEE like we majorly we focus on quantitative structure activity relationship and computer aided drug design. So GPAT में सब पूछा जाएगा, लेकिन NIPER में स्पेसिफिकली QSAR एंड CAD पे फोकस आपको करना पड़ेगा while if you want to like bring a good rank उस केस में. And my last tip for this medicinal chemistry, study medicinal chemistry with pharmacology and biochemistry. So ये तीनों सब्जेक्ट्स को आपको एक साथ मिलके पढ़ना पड़ेगा. मेजरली आपको लोग कहेंगे स्टडी मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी, बट आई विल कम टू दैट इन द बायोकेमिस्ट्री सेक्शन कि व्हाई आई इंक्लूड बायोकेमिस्ट्री. That is my personal strategy. Like I used to link these 3 subjects, not only 2 subjects. Now pharmaceutics. Pharmaceutics में इतने सारे कैटेगरीज मैंने पहले ही बता दिया कि फिजिकल फार्मेसी, यूनिट ऑपरेशन. तो अभी फिजिकल फार्मेसी में क्या, सो मेजरली प्री फॉर्मुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंपॉर्टेंट. सो प्री फॉर्मुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में थर्मोडायनेमिक्स आएगा, कॉम्प्लेक्सेशन आएगा, माइक्रोमेरेटिक्स एंड लिक्विड डोसेज फॉर्म्स. देन इन द यूनिट ऑपरेशन यू विल हैव साइज रिडक्शन, साइड सेपरेशन, डिस्टिलेशन, ड्राइंग. And unit operation in the sense for first year student, I will tell you, it is any operations which are occurring in the pharmaceutical industry to manufacture any drug product. So that is the thing, like unit operation किस तरह. So it is like size reduction, size separation, distillation, drying. अब ये सब unit operations है. So any equipment will be involved. उस केस में equipment या instrument, जो कोई instrument to analyze and equipment for a process. So उस केस में उसका principle पढ़ना होगा, उसका instrumentation पढ़ना होगा, and the theories associated with it. For example, theories associated with size reduction. There are few theories, so that you need to study. Then posology. Posology means it is like a dosage calculation. So उसमें isotonicity, flow spirit, dilution, etc. ये सब चीजें आएगी. Then industrial pharmacy, ये generally 3rd year और 4th year B Pharm students में पढ़ा जाएगा. तो ये भी आपको फोकस करना है. That is a solid dosage form. In industrial pharmacy, you are learning to scale up. आप फिजिकल फार्मेसी माइक्रोमेनेटिक्स पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे, यूनिट ऑपरेशन पढ़ोगे. आप इंडस्ट्रियल फार्मेसी में एक्चुअली उस चीज को पूरा स्केल अप करके कैसे डोसेज फॉर्म कैसे बनाए जाते हैं ये आप पढ़ोगे. सो दैट इज लाइक इन अ सॉलिड डोसेज फॉर्म, लाइक ए टैबलेट, कैप्सूल्स, देन द टॉपिकल्स, देन एरोसॉल. सो ये सब चीजों में क्या पढ़ना है, you need to study formulation, you need to study evaluation, manufacturing and its merits as well as demerits. So हर एक formulation का आपको manufacturing, its evaluation and its merits and demerits, and किस तरह से कौन से excipients use किए जाएंगे, what is the, for example there is sometimes the question is asked कि control release formulation के लिए आपको किस type, which of the following excipients are used in to prepare a control release formulation. So ये सब ऐसे questions रहेंगे, तो आपको formulation पढ़ना होगा. Then biopharmaceutics. In biopharmaceutics, you need to study ADME, that is the absorption, distribution, metabolism and excretion of the drugs. Then you need to study drug release. Then you need to study about the volume of distribution, bioavailability, pro-drug, and BCS classification and BDDCS classification. The BDDCS is nothing but biopharmaceutics drug disposition classification system, and BCS is biopharmaceutics classification system. Generally, आपको ये दोनों के बीच में difference भी पढ़ना पड़ेगा कि what is the difference between BDDCS and BCS. BCS is actually widely used, but BDDCS is actually it is not widely used, but it is used during the research phases, like how the drug is disposed. And drug disposition means it is a metabolism and excretion. It is common thing, it is known as drug disposition. So ये सब चीजों में इसलिए you can say like आपने ज्यादा BCS के बारे में पढ़ा होगा क्योंकि BCS is like important for the regulatory purposes and BDDCS is actually important for the research purposes. That is. Then NDDS, like novel drug delivery system. तो उसमें liposomes, neosomes, nanoparticles, nano formulations, ये सभी मतलब advanced kind of
नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम उसमें आएंगे। तो इसके लिए मैं आपको रिफर कराऊंगा कि फॉर एनडीडीएस यू कैन रीड अबाउट द लास्ट पेजेस ऑफ ब्रह्मांड। So that is like a best that actually explains all kind of NDDS formulations. Now coming to the next part, that next subject, that is a pharmacology. So pharmacology में दो categories आएंगे, again the same thing like general pharmacology and the TA based. TA based means I can say it as a advanced pharmacology. So general pharmacology is very much important for NIPER JEE. For GPAT is also important, but generally NIPER JEE, the focus is general pharmacology weightage carries much more higher as compared to GPAT. So उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, द फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, देन डोज रिस्पांस कर्व, देन मोस्ट इंपोर्टेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज ऑफ रिसेप्टर्स एंड देयर लिगैंड्स। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि ड्रग रिसेप्टर भी 3-4 टाइप्स के रहेंगे, दैट इज अ न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, देन इट इज अ आयन चैनल रिसेप्टर्स, then it is a tyrosine kinase receptors. So ये सब भी रिसेप्टर्स रहेंगे। so इस केस में क्या होगा कि हर एक रिसेप्टर का एक अपना अपना अलग अलग सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे होगा, और वो भी स्पेसिफिक रहेगा कि कौन सा लिगैंड उस पे बाइंड करता है। so ये सभी चीज भी आपको पढ़नी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आई कैन से just for the sake of giving an example, cytokines जो भी होते हैं, if I can say interleukins, okay, so interleukins का main pathway like the receptor involved is tyrosine kinase receptor and the pathway is JAK-STAT pathway. So आपको options में दिया जाएगा कि which of the following cytokines use the or which of the following ligands using the JAK-STAT pathway. So इधर सारे interleukins होगा, इधर acetylcholine होगा, इधर adrenaline होगा. So the correct answer is the cytokines like interleukins जो भी है. So that is the main thing, like why not to focus on signal transduction pathways and as well as the receptors. Then TA based में अगर आप ये क्लियर हो गए, फिर से द सेम थिंग लाइक जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिपीट किया हूँ, मेडिसिनल केमिस्ट्री में बोला हुआ, सेम थिंग मैं फार्माकोलॉजी में बोला। अगर आपको जनरल फार्माकोलॉजी अगर आपका क्लियर होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू फोकस ऑन द टीए बेस्ड फार्माकोलॉजी। क्योंकि अगर आपको सिग्नल फॉर एग्जांपल में अगर दिया जाऊंगा तो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे ही आपको अगर क्लियर नहीं होगा कि कैसा क्या रिसेप्टर, इफ आई कैन गिव यू डिटेल्ड एग्जांपल लाइक एएनएस में मेजरली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, आप एसिटाइलकोलिन के पाथवेज पढ़ोगे, थेरापेटिक्स में आप मायस्थेनिया ग्रेविस डिजीज पढ़ोगे, ठीक है। सो अगर आपको एएनएस मतलब अगर आपको एसिटाइलकोलिन के बारे में पढ़ना है, सो एंड इफ यू डोंट नो लाइक कि द आयन चैनल रिसेप्टर्स, सो आप कैसे एएनएस पढ़ पाओगे अगर आपको आयन चैनल रिसेप्टर्स और उसका सिग्नल ट्रांसडक्शन ही नहीं पता है कि एसिटाइलकोलिन काम कैसे करता है बाइंड करने के बाद, तो आप मायस्थेनिया ग्रेविस नहीं पढ़ पाओगे, आप पूरा एएनएस ही नहीं पढ़ पाओगे, आप कोई ड्रग्स भी नहीं पढ़ पाओगे। So major thing like मैं again and again I will reiterate that focus on the basics should be crystal clear। advance तो हो जाएगा, advance कब होगा जब आप basic पूरा एकदम clear रखोगे, so that is why I will say that basics clear। then in the CNS, then CVS, then GIT like gastrointestinal tract, then analgesics, respiratory system and chemotherapy। by chemotherapy I don't mean only cancer, I mean all the antibiotics and all this kind of things। so then ये सब चीजों में टीए बेस में आपको पढ़ना क्या है। so majorly you need to study the classification, you need to study mechanism action, you need to study adverse effects, metabolism and disorders associated with each system and the management। जैसे फॉर एग्जांपल एएनएस की डिसऑर्डर मेजरली ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग एंड मायस्थेनिया ग्रेविस थी। सीएनएस की डिसऑर्डर तो स्किज़ोफ्रेनिया और एपिलेप्सी ये सब रहता है। सीवीएस का डिसऑर्डर आपको मतलब मायोकार्डियल इंफेक्शन, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर ये सब रहता है। so all this thing। और आप डिसऑर्डर्स कब पढ़ पाओगे अगर आपको जनरल फार्माकोलॉजी आता होगा और अगर आपको ड्रग्स अगर आपको बेसिक एएनएस सीएनएस के बारे में पता होगा तो आप उसके सिस्टम के डिसऑर्डर्स पढ़ पाओगे, एंड डिसऑर्डर्स अगर पढ़ पाओगे तो आपको ट्रीटमेंट भी आ जाएगा। so everything is linked towards the one thing like the general pharmacology or the basics and classification में मैं इधर I would like to reiterate the classification between the medicinal chemistry and pharmacology। इन दोनों साइड्स में आपने क्लासिफिकेशन देखा होगा, लेकिन द क्लासिफिकेशन इन दिस बोथ द सब्जेक्ट्स माइट डिफर समटाइम्स, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर स्केलेटन या स्ट्रक्चर होता है, बट फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द थेरेपेटिक और द मैकेनिज्म एक्शन होता है। so मे बी आपको दोनों चीजें भी आपको साथ में पढ़नी पड़ेगी। and then coming on to the natural products, so in natural products you can say quantitative for GPAT। now I will focus only exclusively for GPAT। नाइपर में क्या है मैं बोलता हूँ बाद में।
So for GPAT NIPER for natural products, you need to study quantitative microscopy, like उसमें भी lycopodium spore formation method, what is the stomatal index, what is stomatal number, and उससे क्या interpretation होता है सब कुछ भी. Then chemical test, like सारे जो अपने chemical constituents होते हैं, like alkaloids, glycosides, tannins, resins and terpenols, ये सभी के chemical test आपको पता होना चाहिए कि what kind of agents are used, then what kind of color which we can observe if the test is positive, what kind of observational change, chemical change if we can observe, like for glycosides and alkaloids and that way. So for example, इसमें अगर मुझे याद आएगा तो ergot alkaloids के लिए, so ergot alkaloids के लिए there is one chemical test, that is one specific, that is a Van Hook's test. So Van Hook's reagent is known as para-dimethyl aminobenzaldehyde, if I am not wrong. 4 साल हो गए अभी पढ़ के, लेकिन कुछ चीजें if I can reiterate. So you have, when you add any Van Hook's reagent to the any sample of the ergot alkaloid, you have some precipitates of one definite color. So that actually is actually the confirmatory test for ergot alkaloids. So that is the thing. So you should know the chemical name of the reagent also, because एक क्वेश्चन जनरली पूछा रहता है हमेशा कि लाइक व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वैन हुक्स रिएजेंट. तो लोगों को सिर्फ वैन हुक रिएजेंट ऐड करके क्या होता है पता रहता है, लेकिन उसका केमिकल नाम नहीं पता. सो दैट इज अ पैराडाइमिथाइल अमीनोबेंजाइड. सो ये सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए. एंड आई हैव गिवन ओनली द एग्जांपल ऑफ वैन हुक्स रिएजेंट, बट देयर माइट बी अदर रिएजेंट आल्सो. सो फॉर अदर ग्लाइकोसाइड्स के लिए भी स्पेसिफिक होगा, टैनिन्स के लिए भी होगा, सब कुछ भी होगा. आई थिंक टैनिन्स के लिए इट इज अ गोल्ड बीटा स्किन टेस्ट. तो उसका पूरा प्रिपरेशन कैसा होता है, व्हाट इज एक्चुअली द केमिकल चेंज व्हिच इज ऑब्जर्व, व्हाट काइंड ऑफ रिएजेंट्स आर एडेड, उसका सब कुछ चीजें आपको क्लियर होने चाहिए. देन डायग्नोस्टिक फीचर्स इन द माइक्रोस्कोपी ऑफ वेरियस ड्रग्स. So all such kind of like कि सारे ड्रग्स की माइक्रोस्कोपी, लाइक उसमें ट्राइकोम्स कितने ट्राइकोम्स है कि नहीं, उसमें ट्राइकोम्स कैसे, उसमें मतलब क्या क्या से भी कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स कैसे, कौन से शेप के, वो सभी थोड़ा याद रहना चाहिए. देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, लाइन जैसे कि हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल इफ एनी ऑफ द मेटाबोलाइट ऑफ द प्लांट लाइक डिगोक्सिन का हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या प्रोडक्ट्स आएगा. So ये सभी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए. Then phytochemistry of various drugs as well as the marine drugs. अभी मैं आऊंगा phytochemistry पे और नाइपर पे. अभी all these things are common for GPAT as well as okay only for GPAT. अभी नाइपर में क्या पूछा जाएगा, नाइपर में ना आपको GPAT में जनरली आपको बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, यूजेस और उसके साथ साथ ये सारे कैटेगरीज, ये सब चीजें याद होनी चाहिए. लेकिन नाइपर में we only focus on the phytochemistry, we only focus on the chemical constituents and the uses and the mechanism action of the particular plant metabolite or the plant the secondary metabolites or primary metabolites of the plant. Okay, so that is the main thing उसमें कि that is the main difference between GPAT and NIPER. इसलिए आपने देखा होगा नाइपर के डिपार्टमेंट में फार्माकोग्नोसी is not any department. The department is called as natural products, because in NIPER generally the research focuses on, for this department is focuses on the extraction of the chemical constituent or the active constituent from the plant and characterizing it in this thing, and actually developing such kind of formulations or anything. Like they actually study about the chemical constituent of the plant and the mechanism action as well as the uses. So इसलिए NIPER JEE के examination में for pharmacognosy you need to focus on the phytochemistry, that is you need to focus mainly on the chemical constituent and the mechanism action and the uses of the plant. But in GPAT you might have the question on the some biological source also, some all these things and other chemical test, quantitative microscopy and marine drugs इतना ज्यादा important नहीं है, but एक दो questions तो आ सकते हैं. So you need to study about the marine drugs, the sources and from where it is obtained and what is the uses. So now coming to the biochemistry. Now this is like these are all for the major subjects in the GPAT as well as NIPER, and now it comes around the minor subjects. अभी मैं students को ये कहना चाहूंगा कि you don't just focus on the major subjects. Some students have the strategies कि okay, if only they need to qualify, then they only focus on the major subjects. So okay, चलो हम major subjects से पढ़ लेंगे, we will get qualified. बात तो सही है कि आप सिर्फ qualify करोगे, लेकिन minor subjects increase your rank. अगर आपको rank लाना है, so you will not have to leave minor subjects, or you cannot ignore minor subjects, because major subjects आपको qualify करवा तो देंगे, लेकिन minor subjects आपका rank बढ़ाएंगे.
and specifically telling if you have any aim, which I have told you in my initial slides, if you have such a good aim of scoring all India rank of 2 digits or 1 digit or that much, so that time you cannot leave any subject. You will have to focus. You will have to equally focus on major as well as minor. And now biochemistry. Biochemistry is very much important minor subject in NIPER JES as well as in GPAT. So biochemistry में आप क्या पढ़ोगे? आप लोग biomolecules पढ़ोगे. So in that biomolecules, majorly you know, like all these kind of are the biomolecules in the body. That is carbohydrates, that is proteins, lipids and vitamins. So ये सभी biomolecules का आप क्या पढ़ोगे? तो उसमें आप classification आपको पढ़ना है, like classification of carbohydrates, proteins, lipids, then vitamins, that is fat soluble, oil soluble, all these things, then metabolism pathways, then chemical test for confirmation of this biomolecules, and disorders with management. Now students, you might be knowing like why I have written to study pharmacology, medicinal chemistry and biochemistry. Now here just I would like to ask question like now where I told you like disorders with management, can you explain like why I told you to study 3 subjects in common? Or can you just build one strategy and explain me like how you will study these 3 subjects in combination? Like how you will add biochemistry in the medicinal and pharmacology? I want responses from students. Yeah. In chats also it is fine. Maybe the organizer can convey me. Yes, students, be interactive, ask your questions. No one is going to judge you. You can tell, even if it is wrong, you can just try. Hi, Yes, sir. Hello. Sir, I am Hemant from Jharkhand. Great. Sir, I am in 3rd year and I am actually preparing for GPAT and NIPER from my 2nd year onward. Sir, actually, I am also preparing. Just you have taught us about biochemistry, ecology link between them. Sir, just like we are preparing for autocoids. Or I am, sir, totally just preparing just like in a format. Just I am, sir, in medicinal chemistry. When I am doing a revision of histamine, just with that I am go through with ecology and for proteins. And प्रोटीन्स में बेसिकली सर आप तो जानते ही हैं सर, प्रोटीन्स में हम लोग जस्ट जितना भी अमीनो एसिड्स है बेसिकली थॉरोली पूरा करेंगे तो ही हम लोग को कॉलेजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री का अच्छा से क्लियर होता है, क्योंकि सिंथेसिस स्टार्ट वहीं से होता है. तो ये लिंक तो बहुत अच्छा होता है सर. Yes, exactly. That is what I wanted. And thank you, Hemant, for proactively responding. Yeah. So this is the perfect answer. Like why you need to link biochemistry also. लोग हमेशा आपको बोलते हैं कि study medchem and ecology, but actually biochemistry को भी आप link करोगे तो you will be understanding the concept very crystal clear. And as I told you in the earlier, right from my earlier slide in the retrospective thinking of the career as well as that path, that equation which I told you, knowledge with application ये दोनों आना चाहिए. तो उस केस में तो अगर आप जितना सब्जेक्ट्स लिंक करोगे, जितना कंसेप्ट क्लियर करोगे, वही तभी आप नॉलेज रख पाओगे और उसको अप्लाई करना सीख पाओगे. So that is good answer. So it's good, Hemant. Thank you. So here now biochemistry में just I'm going to specific so specific topics में क्या आएगा, enzymes आएगा. तो enzymes में enzyme classification, enzyme kinetics, then diagnostic use of the enzyme. This is very important, like SGPT, SDOT, alkaline, ALK, then all these other enzymes are also there. So alanine transfer. So अभी क्या होगा कि देखिए SGPT और SDOT, for example, अगर myocardial infarction में, if I can just remember like कि SDOT, you will find the patients, अगर आप report देखोगे तो उसमें SDOT elevated दिखेगा उस केस में. So that you can see like कि अगर SDOT elevated है, so that is the probability whether the person had a myocardial infarction या फिर future में कभी आने वाला है उस केस में. So SDOT is also known as aspartate transferase and SGPT is also known as alanine transferase. So that is the thing कि आपको पता होना चाहिए कि diagnostic use क्या है enzymes के. तो ये basically पूछा रहता है. And enzyme classification, like if you can say I studied Satyanarayan for this biochemistry, so उसमें O3 लाता था. That is one mnemonic
for enzyme classification. So that you have to study, like how is the enzyme commission classification has been given. देन एंजाइम काइनेटिक्स में अगर मुझे याद है तो माइकलिस मेंटन इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि Km वैल्यू किस तरह से आएगी, तो उस हिसाब से आपका ड्रग कैसे बाइंड करेगा, आपका ड्रग कितने देर तक बाइंड करेगा, सारा ड्रग के भी पीके पीडी प्रॉपर्टीज वो रहेगी उस केस में. So now coming to the next part of the biochemistry, that is the genetics. This is also very much important. If you can say like you need to study the structure of the DNA, you need to study structure of the RNA कि क्या होगा. Then central dogma of molecular biology, that is known as the replication. DNA पहले replicate होगा, replicate के बाद it will get transcribed into mRNA, and after transcription it will be translation into protein. तो ये पूरा सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द स्टेप्स की किस तरह से होता है. तो ये आपको पता होना चाहिए. इन द सेंस आई विल टेल यू नीड टू अंडरस्टैंड. यू डोंट जस्ट मेमोराइज ऑल दिस थिंग. मेमोराइज करके नहीं होता है, आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, नॉट टू मेमोराइज द कंसेप्ट. मैं हमेशा when I been in my Sanofi also, when I guide my newly hired persons or when I guide to my juniors, I always tell them that understand the therapeutic area. You don't need to memorize all these things. Then disorders of the nucleic acid metabolism. अभी सी अगर एक डिसऑर्डर न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म के भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं. अभी एक फेमस डिसऑर्डर है दैट इज नोन एज गाउटी आर्थराइटिस. यूरिक एसिड लेवल्स सीरम में बढ़ जाते हैं, ब्लड में, so it is causing gouty arthritis. That is one of the famous nucleic acid metabolism का एक डिसऑर्डर है. so ये भी सारे डिसऑर्डर्स आपको मतलब पता होना चाहिए. and you need to and by them पता होना चाहिए. that means कि you need to study about the disorders, its how it happens, what is the pathophysiology of the disorders, and what are the treatment for the disorders, and what are the symptoms. so again coming back to this, like कि कैसे लिंक होगा. अभी आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी वो डिसऑर्डर्स पढ़ोगे, कोलॉजी में भी वो डिसऑर्डर्स पढ़ोगे, बायोकेमिस्ट्री में भी वो डिसऑर्डर्स पढ़ोगे. नाउ अगर मैं अपने टाइम का अगर मैं याद करूंगा तो एक मैंने लिंक किया था ड्यूरिंग माय व्हेन आई वाज स्टडीइंग बायोकेमिस्ट्री 4 years बैक. सो उस केस में क्या था कि आई यूज्ड टू स्टडी फॉर गाउट यूरिक एसिड लाइक गाउटी आर्थराइटिस. सो गाउटी आर्थराइटिस में क्या होता है कि यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ जाते हैं. सो वी नीड द इनहिबिटर्स लाइक xanthine oxidase inhibitors. ये एक क्लास है एजेंट्स का. So allopurinol is one of the agent which is used as a xanthine oxidase inhibitor for the treatment of gouty arthritis. क्या है कि आप देखो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप एलोप्यूरिनॉल का स्ट्रक्चर पढ़ोगे कि उसमें कौन सी बेसिक रिंग्स होती है, और बायोकेमिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे, बायोकेमिस्ट्री में आप वो पूरा यूरिक एसिड पाथवे पढ़ोगे कि वो मतलब पूरा यूरिक एसिड लास्ट तक कैसे बनता है. सो दैट इज 2,4,5 ट्राइहाइड्रोक्सी प्यूरिन. सो दैट इज नोन एज द यूरिक एसिड 2,4,6 ट्राइहाइड्रोक्सी प्यूरिन. तो उससे पहले एक मतलब xanthine से वो xanthine oxidase एंजाइम है उसको कैटालाइज करेगा, एंड दैट इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू हाइपोxanthine टू xanthine, देन xanthine टू यूरिक एसिड. सो अभी चीज है कि आप मेडिसिनल केमिस्ट्री में एलोप्यूरिनॉल का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, और बायोकेमिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे, आप xanthine का स्ट्रक्चर पढ़ोगे. सो यू विल बी एबल टू गेस कि एलोप्यूरिनॉल के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है एज कंपेयर टू द xanthine स्ट्रक्चर, क्योंकि एलोप्यूरिनॉल इज अ xanthine oxidase inhibitor. यानी ये क्या करने वाला है, ये xanthine को xanthine oxidase के साथ बाइंड होने के लिए रोकने वाला है. तो उसके लिए क्या होगा, आप स्ट्रक्चर आपके ड्रग का सिमिलर बनाओगे टुवर्ड्स या बायोमोलिक्यूल. सो उस केस में नाउ यू विल रिमेंबर कि क्या डिफरेंस है भाई. एलोप्यूरिनॉल का स्ट्रक्चर भी आपको याद हो जाएगा उसके केस में भी, और xanthine का भी स्ट्रक्चर आपको बायोकेमिस्ट्री से याद ही हो जाएगा. सो दैट इज द अनदर वे ऑफ लिंकिंग लाइक द 3 सब्जेक्ट्स टुगेदर. एंड कोलॉजी में तो आप पढ़ोगे कि क्या सिम्टम्स है, क्या ट्रीटमेंट है, एंड अगेन. सो नाउ कमिंग टू द टूल्स, ये भी एक बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, लाइक द टूल्स व्हिच आर यूज्ड इन द बायोकेमिस्ट्री. ये आपका सत्यनारायण बुक का एकदम लास्ट सेक्शन जैसा मिलेगा. दैट इज द पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, देन ऑल द ब्लॉटिंग टेक्निक्स, देन एलिजा एज वेल एज द रिया. ये सभी आपको टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से उसका मतलब क्या प्रोसीजर है, क्या मे बी फॉर एग्जांपल इन अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी यू विल हैव सम इंस्ट्रूमेंटेशन. और ये अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी आप पहले ही फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ चुके होंगे. ये फिर से आपको बायोकेमिस्ट्री के यूज के लिए मतलब आपको यूजेस में थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा उसके. So these are all the techniques which you need to remember. And remember, biochemistry is very important as a minor. Second minor subject is the microbiology. So microbiology में majorly आपको classification of microorganisms पढ़ेंगे, staining techniques आप पढ़ोगे कि किस तरह से आप stain करना है, how to stain like bacteria, like how to stain, किस सारे आपको staining techniques आपको पता होना चाहिए.
देन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स भी आपको मालूम होने चाहिए, लाइक सेल वॉल, देन सेल वॉल के बारे में पता होना चाहिए, लाइक हाउ विल यू स्टेन सेल वॉल, देन वायरस के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज द लाइटिक साइकिल एज वेल एज द लाइसोजेनिक साइकिल, क्या होगी वो, देन स्टरिलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। थर्ड थिंग इज द एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शंस, ये फिर से थोड़ा सा इम्यूनोलॉजी के अंडर चला जाएगा। And mind you students, like from my corporate experience, I am telling you, since like we are working on the novel molecules maybe, so majorly immunology में अगर आप देखोगे, so majorly there are many many disorders which are related to the immune system nowadays, और वो सारे rare disease के category में जाते हैं। And majorly I can tell you from my corporate experience, like many big giants, they are focusing we are focusing our research on the rare diseases, that also, and it is not the thing like all the companies focus on like they only focus on rare disease and not other, but rare disease focus is also very higher in the multinational pharmaceutical giants, and all the rare diseases are mainly immune system related disorders, so autoimmune disorders if I can say, so that is why अभी आजकल immunology पे बहुत जरा ध्यान देना आपको, इसलिए इन माइक्रोबायोलॉजी लाइट इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बीफार्म सेक्शन, तो इसलिए क्वेश्चंस भी आपको ज्यादा जीपैट और नाइपर में आपको थोड़ा इम्यूनोलॉजी के भी जरा दिखेंगे, वो एक रीजन है, बिकॉज द कंपनीज आर फोकसिंग ऑन द रेयर डिजीज एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, दैट इज व्हाई। सो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस आपको मालूम होने चाहिए कि विच आर द 4 or 5 types of एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, देन immunity, what are the types of immunity, what is the innate immunity, what is the acquired immunity, ये एकदम बेसिक है immunity का, like innate, acquired, then cell mediated, humoral, then the types of hypersensitivity reactions, ये भी बहुत important है। For example, if I can tell anaphylactic shock, yeah, it is one type of hypersensitivity reaction, and we generally, and what is the treatment and how to treat this hypersensitivity reaction, ये भी important है। Like for anaphylactic shock, we give adrenaline for the patients who are suffering from anaphylactic shock, और anaphylactic shock में क्या होगा, it will be a huge bronchoconstriction, इतना bronchoconstriction हो जाएगा कि the person may die as a result of this thing, so that is why directly he is in the emergency room and he has to administer adrenaline for anaphylactic shock, so then it is a type of hypersensitivity reaction again. Then regarding the vaccines, like types and what are the types of vaccines, how they are produced, and what are the source organisms which are used in the production, because ये source organisms GPAT में पूछा जाता है, this is the important thing for GPAT, like for example we are producing this thing, then what are the source like organisms, कि किस हिसाब से मतलब हम कहाँ से लाते हैं। अभी तो मेरा टाइम तो कोविड का था, दैट इज GPAT एंड नाइपर JEE 2020, सो इट वाज अ कोविड टाइम, सो कोविड वैक्सीन का अलग क्वेश्चन आता था कि ये किसने बनाया है, विच इंडस्ट्री इज लाइक ए फर्स्ट इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस, ये हर एक वैक्सीन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोविड वैक्सीन, तो टाइप्स के अकॉर्डिंग हर एक वैक्सीन का किस हिसाब से वो कैटेगरी में किया जाएगा, किस हिसाब से वो काम करेगा, लाइक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, देन डेड वैक्सीन एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। सो अभी क्या चल रहा है, अभी मंकी पॉक्स का चल रहा है, so maybe the question I can say that maybe monkeypox पे कोई question आ सकता है, like the disease pathology of the monkeypox virus, then what is the structure of the monkeypox virus, में structure भी आया गया था, इवन मेरे को अब तक याद है कि when I had given the examination, तो उस टाइम में कोविड वैक्सीन का स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन था, like there was a question on the spike protein, and so कि ये spike protein किस हिसाब से उसके स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन था, and कोई ड्रग्स भी होते हैं जो इनहिबिट करेंगे, so that is the main thing, इसी वजह से वो वायरल स्ट्रक्चर और सब पता होना चाहिए, व्हाट इज गोइंग ऑन लेटेस्ट। अभी उस टाइम तो कोविड चल रहा था, अभी मंकी पॉक्स जरा चल रहा है, तो मे बी आई विल प्रेडिक्ट कि ऐसा कुछ भी अगर लेटेस्ट थिंग्स अगर आए तो you should be able to grasp it. Then it is a biotechnology. Biotechnology में majorly I will focus on the rDNA technology, that is a recombinant DNA technology. उसमें methods क्या क्या use होंगे, what are the vectors which are used, and क्या क्या enzymes उसमें use होंगे recombinant DNA technology में. Then one is the plant tissue culture, उसमें भी types और media क्या use होंगे. Then third thing is very important, monoclonal antibodies. This also I can tell you that from my corporate experience, like majorly if you can, अभी आपको ही समझ आएगा whenever you will open the USFDA approved मेडिकेशन लिस्ट, तो उसमें आपको ज्यादा क्लास सारे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दिखेंगे, एंड व्हाट इज द मेन थिंग टू आइडेंटिफाई दिस वेयर these are the monoclonal antibodies is the names will be ending from MAB, teplizumab, so it is MAB, so that is a monoclonal antibody. So majorly मतलब आपको
मतलब सारे जो चीज होगी ना उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी इंपॉर्टेंट होगा, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग यूजेस एंड एडवांटेज, बिकॉज व्हाई, बिकॉज मेजरली फॉर ऑटो इम्यून डिजीजेस, जो भी मैंने आपको पहले बोला बायो माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में या इम्यूनोलॉजी सेक्शन में कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आर द रेयर डिसऑर्डर, और उस पे ज्यादा रिसर्च हो रहा है आजकल इन बाय मेनी जायंट्स। तो उस केस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के मेजरली ट्रीटमेंट दे आर द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टुवर्ड्स एनी साइटोकाइन्स। तो इस वजह से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आई विल फोकस नाउ। अभी देखिए कि क्या क्या चीजें उस टाइम में 2020 में भी होते थे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उस टाइम में फोकस, लेकिन उस टाइम इतना ज्यादा नहीं था, अभी बहुत ज्यादा है, इसलिए दैट इज व्हाई आई कैन प्रेडिक्ट कि क्वेश्चंस ज्यादा, ये टॉपिक इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। then fermentation, like fermentation, its process and its application, and it is like ki production of antibiotics and vitamins, ki kis kaun sa organism hai which will produce this vitamin by the process of fermentation, and so ye aapko pata hona chahiye। Abhi now here all my brief overview of I cannot tell it as a brief, I can tell like overview of the syllabus, it is like completed। Now let's move on to the third part of the section। Generally देखिए मैंने like now I delivered around 3 to 4 invited lectures regarding this topic like GPAT as well as NIPER JEE। Majorly Q&A session में लोगों का क्वेश्चन आता रहता है कि is NIPER JEE tough, और स्टार्टिंग से ही लोगों को लगता है कि is it tough। तो ये क्वेश्चन में खास करके ये स्लाइड में आंसर करूंगा। तो ये टफ नहीं है, ओके, टफ नहीं है किस स्टूडेंट के लिए, जो कि अपना फोकस एप्लीकेशन पे भी करता है और जो नॉलेज पे भी करता है, मतलब फोकस इज नॉट ओनली ऑन द नॉलेज बट इट्स एप्लीकेशन। सो अगर ये स्टूडेंट कोई करेगा तो उसके लिए वो नाइपर जे टफ नहीं है। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट अलोंग विद द एनालिटिकल थिंकिंग। आई हैव टोल्ड यू लाइक जीपैट में 1.5 मिनट आपको मिलेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट इन नाइपर यू विल हैव ओनली 36 सेकंड्स टू सॉल्व वन क्वेश्चन। तो उस केस में आपको ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम आपको वो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आना चाहिए, एंड विद द एनालिटिकल थिंकिंग विद प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्ट्रेस में है तो आप आ रहा होगा तो वो भी चीज गलत करोगे, ये सब चीजें कॉर्पोरेट में चलती नहीं है। आई एम टेलिंग यू राइट फ्रॉम माय 2.5 years ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस इन द जायंट्स। सो आई एम टेलिंग यू कि ऐसा उधर नहीं चलता है कि अगर आपको स्ट्रेस तो सबको आने वाला है, बट हाउ यू आर हैंडलिंग द स्ट्रेस दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट इन योर सक्सेस। तो आप एग्जाम में अगर गलती करोगे कि चलो अरे यार बहुत सारे 200 क्वेश्चन है, मुझे ये नहीं आया, तो जो आ रहा होगा वो भी गलत करोगे, तो ये नहीं चलेगा। अगर आपके एक एक्शन होगी वो आपको कंपनी में आगे लॉस करा देगी। so that is why we want the candidates like कि इसलिए like these all kind of giants like they go to the tier 1 college or they go to the NIPERs for hiring all this time, because the students are already they are well acquainted with the stress management and the analytical thinking। और सिर्फ एग्जाम के टाइम नहीं, नाइपर में भी स्ट्रेस होता है, वो भी हैंडल करना आना चाहिए। उधर आपके बीफार्म के टाइम का स्ट्रेस तो अलग चीज होता है, नाइपर का भी एक अलग स्ट्रेस होता है ड्यूरिंग द रिसर्च स्ट्रेस, और जो भी क्लासेस मैनेज करना, प्रैक्टिकल्स मैनेज करना, सारे प्लेसमेंट्स मैनेज करना, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस। तो उसको भी मैनेज करना आना चाहिए ड्यूरिंग द नाइपर। ये तो टॉपिक में जनरली दिस काइंड ऑफ टॉपिक आई गिव टू माय alumni talk when I go to since I went to NIPER 2 times after for delivering an alumni talk, so during that talk I used to tell them कि वो stress management भी आना चाहिए उसमें। So time management is very important, as I told कि 36 seconds में आप solve करोगे तो ये रहेगा ये time management तो आना चाहिए। Then accuracy with competition, एक्यूरेट तो होना ही है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ज्यादा। तो आप, मैंने पहले ही बोला था कि कंपटीशन इज सो टफ कि आप अगर एक क्वेश्चन भी रॉन्ग कर दोगे तो यू विल बी बैक विद 20 to 30 रैंक्स, एंड अगर आप 20 या 30 रैंक पीछे हो जाएंगे तो आपको एक कॉलेज इंस्टीट्यूट भी छोड़ना पड़ेगा या आपको ब्रांच भी छोड़नी पड़ेगी, तो आपकी पसंदीदा जो ब्रांच होगी। तो इसलिए एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है, एंड कंपटीशन तो आई टोल्ड यू कि कैसे प्रॉब्लम है कि 20 स्टूडेंट भी पीछे चले जा सकते हैं आपके एक क्वेश्चन रॉन्ग करने से। Okay, now as I have focused during my entire thing like what is the difference between GPAT and NIPER, so but just मैंने ये slide पे मैंने clear किया हुआ है कि what is actually, so it is like as I told it is GPAT has 125 questions, NIPER has 200 questions। GPAT में टाइम 3 घंटे का है, NIPER में 2 घंटे का है। GPAT में रीजनिंग और एप्टीट्यूड और वो नॉन फार्मा पार्ट आता नहीं है, बट नाइपर जेई में 15% ऑफ पार्ट इज बेस्ड ऑन दिस एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। इसके लिए आप नॉर्मल चीजें भी कोई नॉर्मल बुक से, इंटरनेट से कोई भी सोर्सेज आप प्रैक्टिस कर सकते हो एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए, और ये प्रैक्टिस से ही बनेगा।
GPAT actually पहले की slide है, that needs to be updated. That GPAT is now conducted by NBEMS, National Board of Examination in Medical Science. पहले NTA conduct करवाती थी, अभी NBEMS conduct करती है. Now NIPER it is as conducted by NIPER. So GPAT is a prerequisite criterion for all the institute. यानी सारे B Pharm, सारे M Pharm के institution के लिए GPAT prerequisite criteria, but for NIPER JEE it is like a prerequisite criteria for only for NIPERs. So that is the thing. Yeah. Abhi last section, like many students ask like what kind of reference book are needed for each subject. So इसलिए मैंने ये slide खास करके इधर डाली हुई है. So for physical pharmacy you can study Martin as well as from CVS Subramaniam. Biopharmaceutics के मैंने पहले ही बोला कि ब्रह्मांड, it is the best book for clearing concept. Unit operation, again you can use CVS Subramaniam. Industrial pharmacy only use Lackman and Lieberman and Remington. Physical chemistry you can go to Balantulli, and for organic chemistry you can go to Morrison and Boyd. Sir, I have one question, sir. Yeah. Can I ask yet or after the session, sir? Yeah, I think you can. We can take Q&A after the session. That's not an issue. Yeah. Okay. We just complete so that later on we can. Okay, sir. Okay. Okay. So then for organic chemistry you can use Morrison and Boyd and Bhal and Bal. That is also a point. For Morrison and Boyd is very important. For medicinal chemistry you can use Wilson and Gisward and Foes. And for synthetic parts specifically I will tell use Algar-Sami. I have used Algar-Sami for synthesis. So all the synthesis of the drugs which are important. Then for pharmaceutical analysis you can use Chatwal as well as Y.R. Sharma and Remington and Pavia. All these 4 books. Then for pharmacology I will focus on the K.D. Tripathi as well as the Rangendale. I will tell here also there is a bifurcation. For general pharmacology, use Rangendale. And for all the drugs, therapeutic areas like drugs acting on various systems, you can use K.D. Tripathi for PK, PD, and what are the metabolism, what are the adverse effects. So all those drugs are very well explained in the K.D. Tripathi. And for general pharmacology, use Rangendale, like for the signal transduction pathways, for types of receptors, it will solve all your concepts. For pharmacognosy, you can use C.K. Gogate. It is a gold standard. That is fine. For biochemistry, use Satyanarayan. That is best. I have used Satyanarayan only during this trip. So entire concepts get clear along with the structures. That is the main thing. And for jurisprudence, it is a one. That is why I have not covered this jurisprudence, because jurisprudence is all about the acts and the laws which need to be memorized. So for example, the acts and the passing year you will have to memorize. Like prerequisites of the some acts that also you need to memorize. So like Pharmacy Act, Drug and Cosmetic Act, then NDPS Act, then all many acts are there. So that you will have to memorize all these things for jurisprudence. You will have the questions on jurisprudence in GPAT also, but in NIPER you will have very less question or there is very less chance. So for jurisprudence you can use GK Jani as a one book, and also if you are not you can use NK Jani also, but I prefer GK Jani for this. Now do's of the preparation. So this is like during the what should be done during the preparation. So this is the first and foremost thing is the goal setting that I covered in my first slide, like how you need to set the goal and how you need to check for the branches and the seeds based on your category. So that is very important. So you need to start your preparation right from the first year on itself. Then you need to group subjects as I told you previously. So you need to link subjects wherever applicable, like biochemistry, microbiology, biochemistry, medicinal chemistry, ecology. So where you will have to link. Even you can link biopharmaceutics also with these subjects. Then read reference books and prepare notes. This is very, very important for students. I will focus on this third point because many students don't like reading reference books since they are very in detail. But आपको समझ में आना चाहिए कि if you read reference book, then only आपके concepts clear होंगे. अगर आप टेक्स्ट बुक सिंपल कोई रेफरेंस बुक से बनाई हुई टेक्स्ट बुक से पढ़े जाओगे तो वो नहीं होने वाला. और रेफरेंस बुक पढ़ के खुद के नोट्स प्रिपेयर करो, क्योंकि खुद के नोट्स प्रिपेयर करना इट इज डिफरेंट थिंग. अगर आप खुद ही प्रिपेयर करोगे तो आपको कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा और आपका रिटेंशन भी ज्यादा रहेगा, लाइक आपको याद भी अच्छे से रहेगा. तो दैट इज द मेन थिंग. देन स्टडी अबाउट द रिसर्च एरियाज, अचीवमेंट्स ऑफ फैकल्टीज एंड स्टूडेंट. ये जो फोर्थ पॉइंट है ये स्पेसिफिकली तब करना है जब आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं. मतलब मैं क्या करता था, अभी आपको पता है 4 साल it is not an easy thing to prepare, since you might be knowing like GPAT and NIPER it is one of the toughest competitive examinations in the India. Like if you can say GPAT is the 6th toughest competitive examination in India
फॉर दैट। पहले उसका गेट हुआ करता था, गेट का भी जीपैट कन्वर्ट हुआ, दैट इज व्हाई इट इज। सो इतने टफ एग्जामिनेशन के लिए 4-4 साल, इट इज, आई एम टेलिंग यू कि इट इज नॉट दैट थिंग कि 4 साल तक कंसिस्टेंसी, 4 साल तक डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन सब कुछ रखना। सो कभी कभी देर विल बी थिंग्स लाइक यू माइट बी बर्न आउट, देर विल बी थिंग्स लाइक कि आपको स्ट्रेस फील होगा, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको डिस्ट्रेस होने के लिए उल्टा आप टाइम पास करने से अच्छा आप नाइपर के रिसर्च एरियाज पढ़ो, आप नाइपर के फैकल्टीज के अचीवमेंट्स पढ़ो, नाइपर का लिंक्डइन पेज, उसका प्लेसमेंट डेटा सब कुछ आप फॉलो करके रखो उसमें, स्टे एक्टिव ऑन लिंक्डइन एंड गेन नॉलेज ऑल अबाउट द प्लेसमेंट्स ऑफ नाइपर, गेन नॉलेज व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स एट नाइपर, गेन नॉलेज अबाउट कि नाइपर में क्या रिसर्च हो रहा है। सो इसमें क्या होगा ना, इसमें आपका स्ट्रेस एक तो कम ही हो जाएगा क्योंकि आप पढ़ाई से वो थोड़ा सा दूर जाओगे और ये पढ़ोगे, और ये पढ़ते पढ़ते आपको फिर से ड्राइविंग फोर्स मिलेगा कि ओके ये तो नाइपर में तो इतना ये चीज पे रिसर्च है, ओके सो आई नीड टू स्टडी, आई नीड टू गेट बैक, आई नीड टू स्टडी। तो ये मेन एबिलिटी है कि अगर आप स्ट्रेस हो गए तो आपका जो स्ट्रेस डी बस्टर है वही एक्चुअली बैकफायर करता है आपके बस में, कि आपको बोलता है कि नहीं कि पढ़ना है और अच्छे तरीके से। So all this kind of things I used to follow. And second last point is be your own examiner. अभी be your own examiner यानी क्या, अभी मैंने पहले ही बोल चुका था कि पेपर तो मतलब टफनेस और ये सब तो रहने वाला, लेकिन टफ किस स्टूडेंट के लिए नहीं रहेगा, जो कि नॉलेज को पूरा करेगा, वो डेडिकेशन से होगा, वो पैशन से पढ़ेगा, वो अप्लाई करेगा। अभी इस केस में बी योर ओन एग्जामिनर मतलब क्या कि आप कंसेप्ट को पहले समझोगे। आप सपोज अगर आपने कोई एक कंसेप्ट पढ़ा, एएनएस का कोई अगर ड्रग पढ़ लिया, पूरा एएनएस आपने पढ़ लिया, अभी आप क्या करो, आपके नोटबुक में आप अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करो, और वो क्वेश्चन आपने खुद ने बनाए हुए होने चाहिए, और वो क्वेश्चन उस तरीके से चाहिए कि आपको एम रखना है कि मैंने जो बनाए हुए क्वेश्चन है उसमें से कोई भी आदमी या कोई भी बॉय या गर्ल पास नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ओके, दैट यू अंडरस्टूड। तो दैट इज द मेन थिंग, मतलब क्वेश्चंस आप उतने टफ बनाओ कि ताकि दूसरा कोई पास नहीं हो पाए, सभी लोग उसको रॉन्ग ही करें। ये एम से लेके आप क्वेश्चन आपके खुद के बनाओ, ताकि क्या होगा, ताकि आपको प्रोबेबिलिटी आ जाए कि दिस इज द थिंग, लाइक कि क्वेश्चंस उस तरह से बनते हैं और उस तरह से आप एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चंस मतलब बना पाते हैं। लास्ट पॉइंट इज द रिफर एनएम इनामदार, एनएम इनामदार को रिफर करिए नाइपर के लिए, दैट इज बेस्ट। सो आई होप आई एम क्लियर, इज माय वॉइस क्लियर? Hello? Yes, sir, clear. Yeah, it is clear, right? Because there is some noise from my end. I will have some microphone because there is a background noise. Just give me a minute. Yeah. Yeah. Am I audible? Am I Yes, audible? sir. Yeah. So you, Yeah. Because there is a one background noise coming from my side. Yeah. Then now the exam strategies, like what you need to do in this 2 hours of the examination. This is like I will tell my students like to please आप इस पे पूरा ध्यान दीजिए, बिकॉज मैंने पहले ही बोला था कि लोग 4-4 साल पढ़ते हैं, लोग इतना मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम के दिन क्या करना है उसकी स्ट्रेटेजी रेडी नहीं होती, तो उस वजह से दे सफर लॉट। एंड आई एम टेलिंग यू कि इट इज अ मोस्ट थिंग। उल्टा जो प्रिपेयर नहीं करोगे तो अभी जो दुख होगा वो अलग बात है, लेकिन प्रिपेयर करने के बाद भी आगे नहीं कर पाओगे ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रेटेजीज एंड प्लानिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। वो 2 घंटे की प्लानिंग नहीं है, उस वजह से और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें क्या होगा कि मेजरली आपको टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी याद रखनी है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या होना चाहिए, नाइपर देखो जीपैट का मैं बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि जीपैट का आपके पास बहुत एम्पल टाइम है। मेरे को खुद को अगर मैं बोलूंगा तो मैंने 125 क्वेश्चंस मैंने 1 घंटे में सॉल्व कर दिए थे, बाकी के 2 घंटे में बैठ आई वॉज जस्ट अगेन 2-3-4 बार मैंने क्वेश्चन पेपर्स पढ़ लिए थे और आगे वेरीफाई कर लिए, इसलिए जीपैट में बहुत टाइम होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 125 क्वेश्चन 1-1.5 घंटे में सॉल्व हो जाते हैं इफ यू आपका प्रिपरेशन कुछ तरह से होता है उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन नाइपर में ना, नाइपर में यही प्रॉब्लम है, नाइपर में आपको मेजरली स्टूडेंट्स को पेपर इनकम्प्लीट ही रह जाता है, क्योंकि 200 क्वेश्चन वो इतना सॉल्व ही नहीं कर पाए 2 घंटे में खाली, क्योंकि मैंने बोला था 36 सेकंड ही है एक क्वेश्चन। सो दैट इज व्हाई इधर आपको स्ट्रेटेजी, एक डेफिनेट स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ती है। तो क्या करना है, मैं बोलूंगा मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी। मैंने नाइपर जेईई का पेपर में 2 राउंड्स में सॉल्व किया। फर्स्ट राउंड में पेपर सॉल्व करता जो मेरे को आ रहा है, फॉर एग्जांपल अभी 1 to 200 क्वेश्चन है, अभी मेरे को जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं करते करते जाऊंगा और मैं सिलेक्ट करते जाऊंगा और मैं सेव करते जाऊंगा।
अभी जो भी क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर देखूंगा ये क्वेश्चन आ रहा है इसमें सोचना है, इवन मैं ये भी बोलूंगा नहीं आ रहा है इन द सेंस वो नहीं आ रहा नहीं, इसमें सोचना है। मतलब कुछ अगर न्यूमेरिकल डाल दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सही होगा, 6 क्वेश्चन एक बड़ा न्यूमेरिकल होगा जिसमें फॉर्मूला कैलकुलेट करके कुछ जरा बहुत सोचना है, या फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री का फ्रेगमेंटेशन निकालना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो आप फ्लैग कर दो, फ्लैग फॉर रिव्यू, मतलब उस पर टाइम ही नहीं लेना है सोचने वाले क्वेश्चन में, उसको फ्लैग ही कर देना, एंड देन जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो आपको पहले ही 2 या 3 सेकंड में ही आपको आ रहा है, वो क्वेश्चन पहले आप सॉल्व कर लें। ओके, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करने के बाद क्या करोगे, फिर वो फर्स्ट राउंड आपका हो गया। फर्स्ट राउंड होने के बाद सेकंड राउंड में वो सारे क्वेश्चन हो जिसमें आपने फ्लैग किया हो, सारे फ्लैग फॉर रिव्यू किया। अभी फ्लैग फॉर रिव्यू में भी क्या जो कैलकुलेशन है वो एकदम आसान से, तभी टाइम लेके कैलकुलेशन करो और आंसर पूरा टिक दो, आंसर उसमें टिक कर दो, दिस इज डन, वो भी सेव कर, ऐसे भी करते। तो सेकंड राउंड में करने के बाद क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आ रहे तो उसमें नहीं आ रहा होगा तो दैट इज अ स्ट्रेटेजी कि नेगेटिव मार्किंग कितना है वो आपको थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा कि वो नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 50% भी ऑप्शंस अगर एलिमिनेट कर पा रहे हो तो यू कैन गो अहेड विथ योर चांस कि उसमें से भी 2 ऑप्शन में से प्रोबेबली ये वाला करेक्ट हो सकता है, अगर आपको उतना कॉन्फिडेंस है तो। और वो भी मैं नहीं बोलूंगा कि सारे क्वेश्चंस के लिए ऐसा मतलब चॉइस हो, ऐसा सारे चॉइसेस लेना चाहिए। कोई क्वेश्चंस के लिए जो अगर आपको चॉइसेस चांस है ना तो आप ले सकते हो। इवन तो चांस कब लेना है, इफ आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए हुए तभी, क्योंकि एक क्वेश्चन राइट करने की प्रोबेबिलिटी हायर उस केस में, तो तभी आपको चांस। डोंट पैनिक विद द लेंथी क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले ही बोला, कुछ भी नहीं आ रहा होगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ लेंथी क्वेश्चन होगा उसको फ्लैग फॉर रिव्यू ही कर देते, बाकी कुछ भी आपको सोचना नहीं है उसके, वो सेकंड राउंड में लेना। एंड नेक्स्ट इज द बिवेयर ऑफ द ट्रैप्स। अभी ट्रैप्स क्या है वो मैं बोलता हूँ, दिस मैं स्टूडेंट्स को ये फोकस करना कि नाइपर जेई एग्जामिनेशन में पर्पसली ट्रैप्स रखे जाते हैं, मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स के लिए। और वो ट्रैप्स उस वजह से है क्योंकि देखना है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं और टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और आपके पास कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्ट्रेटेजीज है या नहीं है, उस वजह से ट्रैप्स लगे। तो अभी ट्रैप्स यानी क्या होता है, मैं एक ट्रैप एग्जांपल देता हूँ आपको कि कैसे ट्रैप्स लगे रहते हैं। अगर कैंडिडेट ए है, ए कैंडिडेट है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, उसको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 में एकदम न्यूमेरिकल रख दिया, एकदम बड़ा न्यूमेरिकल जिसमें कुछ या मास स्पेक्ट्रोमेट्री का फ्रेगमेंटेशन या वुडवर्ड फाइजर रूल का थोड़ा लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन, ऐसा कुछ क्वेश्चन जरा बड़ा अगर रख दिया क्वेश्चन नंबर 7 में। और बी कैंडिडेट अगर होगा, बी कैंडिडेट का वो आंसर अगर वो क्वेश्चन अगर होगा क्वेश्चन नंबर 10 या 20 पे, तो ए कैंडिडेट क्या करेगा, ए कैंडिडेट क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कर देगा, 7th वाला जैसे मैंने पहली स्ट्रेटेजी बोली वो फ्लैग करके छोड़ देगा ऐसा कि चलो नेक्स्ट राउंड में देखते हैं। बी कैंडिडेट अगर आया, उसका अगर क्वेश्चन नंबर 28 अगर ऐसा हुआ तो 1 to 19 के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, क्वेश्चन नंबर 20 में वो एकदम बड़ा क्वेश्चन आएगा और वो बी कैंडिडेट क्या करता है, बी कैंडिडेट वो सॉल्व करने लगता है फर्स्ट राउंड में, और वो इतना ट्रैप वाला होता है कभी कभी जो बी कैंडिडेट वो सॉल्व करने लग जाता है, उसको चलो ये आंसर नहीं आ रहा है तो फिर से लगाओ और फिर से एक बार सोचते हैं, ऐसे करते करते क्या करता है उसका आंसर ही नहीं आता है और वो 5 मिनट या 4 मिनट वो एक क्वेश्चन पे मिस कर दे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। तब तक ये एक कैंडिडेट 50 या 60 क्वेश्चन पे पहुंच भी गया होता है, क्योंकि वो एक कैंडिडेट ने स्ट्रेटेजी यूज की है कि लेट इट बी, आई विल सॉल्व इट इन नेक्स्ट राउंड, या मैं बाद में देखूं, तो अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो खत्म करना है। बी कैंडिडेट क्या करता है, बी कैंडिडेट वो क्वेश्चन नंबर 20 पे ही 4-5 मिनट लगा देता है और फाइनली आंसर नहीं आता तो वो गिव अप कर देता है कि ओके चलो यार अभी नहीं आ रहा, छोड़ देता हूं। तो दिस इज नोन एज लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ स्ट्रेटेजी। तो ये क्वेश्चन क्या करता है ना, बी कैंडिडेट क्या होगा, बी कैंडिडेट का केस में पूरा का पूरा 200 क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो पाएगा, वो रीड ही नहीं कर पाएगा 200 क्वेश्चन। अचानक से जब वो 125-130 क्वेश्चन आ जाएगा, पेपर ऑटो सबमिट हो जाएगा क्योंकि 2 घंटा खत्म हो गया ऐसे। तो यू आर अंडरस्टैंडिंग, ये ट्रैप्स रहते हैं एंड दीज आर पर्पसली ऐसे ट्रैप्स रखे जाते हैं। अगर चाहे तो आप वो एक क्वेश्चन ना अटेम्प्ट ही मत करो, वो अगर अनअटेम्प्ट रखोगे तो भी आपको ज्यादा फायदा है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग 5 minutes ऑफ योर टाइम एंड लुकिंग फॉर सॉल्यूशन फॉर दैट क्वेश्चन। So I hope I am very clear with this, beware of the traps, क्योंकि मैंने खुद ने, मैं जब एग्जामिनेशन के बाहर आता वो मेरे जूनियर्स भी मुझसे ये कभी कंप्लेंट करके, वो जनरली क्या लोग बोलते हैं कि सर पेपर तो खत्म ही नहीं हो पाया, पेपर बहुत लेंथी था। अरे पेपर लेंथी नहीं था, आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं थी कि हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ लेंथी पेपर। पेपर लेंथी नहीं होता है, पेपर सबके वैसा ही होता है, लेकिन आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है कि वो लेंथी पेपर को हैंडल कैसे करना है, क्योंकि आपके पास पुअर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत पुअर है।
नेक्स्ट थिंग, अप्लाई कंसेप्ट्स इफेक्टिवली। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नॉलेज को अप्लाई करना सीखो, दैट इज एसेंशियल इन कॉर्पोरेट आल्सो एंड दैट इज टेस्टेड राइट फ्रॉम दिस एग्जामिनेशंस। अभी my second last slide, like this is my penultimate slide, कि personalities, types of personalities क्या होते हैं। This generally I give like I give such kind of presentations to the corporate or to the newly hired freshers in the field. Like in industry, I give such kind of presentation slides. So उसमें, but why I am telling you or why I have put this slide into here, like right from, because you are BPharm students. For you, industry is more 4 to 5 years late. Okay, 4 to 5 years down the line in future. But I believe like कि student को अभी से ही you need to be future ready or you need to be corporate ready. So that is the main goal. Like कि मैं क्यों ये इंडस्ट्रियल जो स्लाइड है, इंडस्ट्री में देने वाला वो स्लाइड है, फ्रेशर्स को देता वो स्लाइड में आपको बीफार्म की तरफ से रख रहा हूँ। दैट इज द रीजन। अभी जनरली ना ह्यूमन साइकोलॉजी में 4 टाइप की पर्सनालिटीज और आगे देखी गई है, इवन उससे भी ज्यादा है, बट आई कैन टेल this is like I shape, T shape, I shape and cone shape. You assume this as a graph, ये graph है। Okay, so graph में this x axis in the this thing, x axis deals with the breadth of the knowledge. Breadth of the knowledge यानी कि कितना आपको knowledge, कितने subjects में आपको knowledge है, how your knowledge is broad enough. Okay, and the y axis deals with the depth of the knowledge. Depth of the knowledge means कि एक subject में particularly कितना knowledge आपके पास deep है। So सबसे पहली personality, whenever the person will start focusing, तो उसमें पहली पर्सनालिटी क्या होगी, he will be I-shaped person. So this I-shaped person is known as specialist in one field. यानी पहले आप स्टार्ट करोगे यहाँ से, धीरे धीरे एक फील्ड से स्टार्ट करोगे, एक फील्ड में आप अपना स्पेशलाइजेशन रखोगे, इधर मतलब धीरे धीरे आप ऐसा अपना नॉलेज का डेप्थ बढ़ाते जाओगे एक फील्ड में। सो दिस इज नोन एज I-shaped पर्सन, और आपके पास फील्ड एक ही है, एक ही सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट शेप इज द T-shape। T-shape में क्या होगा, T-shape में आप पहले से ही एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज तो हो ही, आपके पास एक सब्जेक्ट में डीप नॉलेज है, अभी आप अपना नॉलेज को ब्रॉडन कर रहे हो, मतलब आपका वो नॉलेज आप दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए आपका ब्रॉड करते रह रहे हो। फिर क्या होगा, फिर टी शेप के बाद नेक्स्ट जो पर्सनालिटी आता है दैट इज अ पाई शेप पर्सनालिटी। पाई शेप पर्सनालिटी में क्या होता है कि पाई शेप पर्सनालिटी में जनरली ओकेजनली और जनरली द पर्सन स्टार्ट्स बिल्डिंग द स्पेशलिटीज इन द अदर सब्जेक्ट्स, मतलब जैसे ब्रॉड नॉलेज बढ़ाता रहेगा, दूसरा सब्जेक्ट आएगा, दूसरा सब्जेक्ट में स्पेशलाइज बनते रहेगा। सो नाउ यू हैव द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज इन द 2 areas, लाइक यू आर स्पेशलिस्ट इन 2 subjects विद अ ब्रॉड जनरल नॉलेज, अदर सब्जेक्ट नॉलेज। फिर धीरे धीरे इवेंचुअली क्या होता रहेगा, दिस पाई शेप पर्सन will get converted into the comb shape person. So comb shape में देखिए, comb shape में आपके पास मल्टीपल स्पेशलिटीज है, मतलब आपके पास ब्रॉड जनरल नॉलेज भी है और आपके पास स्पेशलिटीज भी है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपके पास नॉलेज भी है, जनरल नॉलेज भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स तक आपका नॉलेज ब्रॉड है और आप स्पेशलिस्ट भी हो हर एक सब्जेक्ट में। सो इन कॉर्पोरेट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, इन कॉर्पोरेट दिस comb shape personalities are more preferred इन दिस, क्योंकि आपके पास जनरल नॉलेज भी बहुत है और आपके पास एक से ज्यादा एरियाज में आपके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है। सो दैट इज द रीजन। अभी नाउ आई वांट समवन फ्रॉम यू, फ्रॉम द स्टूडेंट एंड, कि अभी मुझे बताओ कि मैंने ये स्लाइड इधर क्यों इंक्लूड की, हाउ सिंपल, मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूंगा कि हाउ दिस स्लाइड, दिस comb shape पर्सन और दिस टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज इज रिलेटेड टू द GPAT एंड नाइपर एग्जामिनेशन, कैसे रिलेटेड है ये मुझे बताओ। Anyone unmute and tell? Sir, according to this, whichever you have thought right about this personalities and before this topics about the GPAT NIPER, sir, according to हम लोग पढ़ते सर सब कुछ हैं, बट उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं कहाँ पे, मतलब स्पेसिफिकली उसको अप्लाई कहाँ करना है, जो कि हम लोग के लिए बहुत इशू होता है सर। पढ़ते तो हम लोग सब हैं सर, रिवीजन भी कर रहे हैं, बट ना एक्चुअली वो किस पर्पस से पढ़ रहे ये नहीं पता होता। यस, तो वही मेन रीजन है कि आपको कंसेप्ट पूरे आपको क्लियर रखने हैं। आप अगर कंसेप्ट क्लियर रखोगे, आप क्योंकि कंसेप्ट नहीं एप्लीकेशन है, कंसेप्ट अगर आप क्लियर रखोगे कि किस पर्पस से पढ़ रहे हो, कि व्हाई व्हाट इज द पर्पस, तो इसलिए तो दैट इज व्हाई आई एम हियर, कि इसलिए मैं कॉर्पोरेट में भी मैं बोलता रहा था कि क्यों आपको इम्यूनोलॉजी पढ़ना है, क्यों इतना डायनामिक्स चेंज हुआ है, बिकॉज रेयर डिजीजेस में सारे लोग अभी आ रहे हैं मोस्टली,
और सिर्फ इम्यूनोलॉजी की बात नहीं, क्यों आपको मतलब ये सब चीजें पढ़नी है, इट इज लाइक ड्यू टू क्यों आपको नाइपर और जीपैट की इतनी प्रिपरेशन करनी है, व्हाई प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नेसेसरी, बिकॉज इन कॉर्पोरेट वी नीड टू हैंडल सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स और वी नीड टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, उस वजह से पढ़ना है. बट दिस इज लाइक दिस इज योर 40% योर आंसर इज करेक्ट. बट नाउ आई वाज आस्किंग कि ये जो कोम शेप पर्सनालिटी है ये आपको जीपैट एंड नाइपर से कैसे रिलेट कर पाओगे? हाँ, दैट वाज माय क्वेश्चन. You have answered it correct. It is 40% correct, but major part is there, 60%. Anyone try to this? See, I will reiterate. You have to be specialist in one or more subjects with a broad general knowledge. This is a comb shape person. और ये तुरंत नहीं आने वाला है एक ही टाइम पे. You need to start from I shape to be a comb shape. Anyone try? Just. सर सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि हम लोग को आगे पता नहीं है कि कौन सा एरिया ज्यादा ग्रोथ करेगा बाद में. Exactly. This is like around 70% if you can tell that you have. Now I will explain you. Okay, thanks for the responses, proactive responses. I like the interaction with the students. So main thing क्या है कि देखिए कोम शेप पर्सन में क्या है, आपके पास जनरल नॉलेज भी है सारा और आप स्पेशलिस्ट भी हो एक एक सब्जेक्ट में. तो वही जैसे अभी का आंसर आया कि you need to study subjects. You need to study subject in depth. Okay. वो अगर आप एक क्योंकि देखिए जीपैट अभी इतना सिलेबस देखा, इट इज लाइक आई टोल्ड यू इन माय इनिशियल रेट्रोस्पेक्टिव थिंकिंग वाली स्लाइड में कि ये जो बी फार्म से जर्नी है जीपैट और नाइपर तक की, इट इज अ जेनरिक. सो आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे. तो उस केस में अगर आपको लगे कि आपको बस फार्माकोलॉजी पसंद है और आपको दूसरे कोई भी सब्जेक्ट्स आते ही नहीं है तो नहीं चलेगा. यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेल इन दिस एग्जामिनेशन. इस एग्जामिनेशन में आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको एक्सेल करना होगा तो आपको ब्रॉड जनरल नॉलेज भी चाहिए, उसके साथ साथ आपको डेप्थ नॉलेज भी चाहिए सब्जेक्ट के बेस में. सो दैट इज व्हाई कोम शेप पर्सन इज एक्चुअली टेस्टेड. सो ये मेरा कंक्लूडिंग वर्ड है कि कोम शेप पर्सनालिटी डेवलप करो तो आसानी से यू विल बी एबल टू क्वालिफाई विद नॉट जस्ट क्वालिफाई, यू विल बी एबल टू गेन प्रेस्टिजियस ऑल इंडिया रैंक्स इन द एग्जामिनेशन. और ये मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से मालूम पड़े. Actually, these things I give this kind of slides in the corporate. I give this kind of slides to the newly जो नाइपर से place होके generally जो freshers आते हैं, they are coming to an industry. तो मैं उनको ये slide से guide करता हूँ. But now I thought this slide should be present right from the B Farm students, क्योंकि इसको मैं relate कर पाता हूँ कि from the GPAT point of view. So GPAT as well as NIPER point of view. Okay. Now my final words. This is my last slide of the presentation. जैसे one question आया था कि what is the purpose? So that was a good question कि हम इतना पढ़ते हैं लेकिन उसका पर्पस चीज है क्या है, कुछ नहीं समझ आता. So the purpose of establishing नाइपर वो भी एक चीज है उसमें भी कि क्यों हम इतना पढ़ रहे हैं, क्यों इतना नाइपर एग्जामिनेशन का क्यों इतना टफ रखा जाता है, क्यों इतना मतलब इतना स्ट्रॉन्ग फिल्टर अप्लाई किया जाता है, क्यों सीट्स इतनी कम है उधर से. तो ये इसका मेन रीजन है. अभी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी देखिए नाइपर का ऑब्जेक्टिव क्या था. सी इट इज इन ऑर्डर टू इंडियन फार्मा इंडस्ट्री हैज बीन अ ग्लोबल लीडर इन द जेनरिक ड्रग्स in order to acquire leadership position in drug discovery and development and to continue excel in this thing. So government recognizes that human resource or talent pool is very crucial. So ये मेन जो highlighted part है ना, yellow highlighted part, that is your purpose here. In order to acquire leadership position in drug discovery and development. So that is the objective of establishing NIPER from the 1998. So right from the DOP, why government of India is establishing, why government of India is investing so much money in the research or so much money on the NIPER. So it is the reason like कि NIPER का objective है कि to produce leaders in the pharmaceutical industry. So अगर आपको leaders बनना है pharmaceutical industry में, so इस वजह से आपको ये सारी abilities आनी चाहिए. You need to apply concept, you need to be clear, deep in knowledge, you need to be cone-shaped persons, then you need to be a good problem solver, you need to be solution oriented individual. So ये सब qualities चाहिए students में. और ये सब qualities कहाँ से filter out करेंगे, कुछ exam लेके ही filter out करना पड़ेगा. तो इस वजह से
जीपैट और नाइपर जेई में ये सारी चीजें टेस्ट होती है, एंड फॉर दैट रीजन आपका पेपर और आपकी जो स्टडी ओरिएंटेशन है, जो आपका एम और जो आपका ओरिएंटेशन होगा राइट फ्रॉम द बी फ्रॉम राइट फ्रॉम द एकेडमिया साइड, तो आपका लीडरशिप बनने के लिए होना चाहिए इन द इंडस्ट्री. Now I will just added one snippet of the section 7 of the NIPER Act. Okay, so section 7 of the NIPER Act, subsection 1 tells that to nurture and promote quality and excellence in pharmaceutical education and research. So that is one of the function of the institute, function of the NIPERs, like to nurture and promote quality and excellence in education and research. So इस वजह से then I would like to concentrate on subsection 10. So section 7 subsection 10 says that to develop a world level center for creation of new knowledge and transmission of existing information in the pharmaceutical areas with focus on national, educational, professional and industrial commitments. That is the thing here. So subsection, section 7 actually tells what is the function of NIPER. Okay, section 7 of NIPER Act, that is specifically subsection 1 and subsection 10 is a guiding force, like why you should prepare और आपको क्यों इतना ध्यान देना है उस केस में. अगर आप ये पर्पस से क्लियर होगा ना कि आपका अगर एम क्लियर होगा कि यू नीड टू बी ए लीडर इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कम एज में आपको यू विल हैव टू एक्वायर हायर डेजिग्नेशंस. so that is the thing. यहाँ से अगर आपका ड्राइविंग फोर्स डाल होता है कि why you are preparing for the NIPER. एंड यही चीज मेरी लिंक होती है रेट्रोस्पेक्टिव थिंकिंग अप्रोच से, कि अगर आपको करियर में एकदम आगे बढ़ना है, कम एज में आपको सीनियर पोजीशंस पे आना है, कम एज में यू हैव टू लीड द थिंग्स, यू हैव टू लीड सम प्रोजेक्ट्स, यू हैव टू बी अ की मेंबर इन द डिसीजन मेकिंग एट अ वेरी लेस एज, तो आपको स्टार्टिंग से बी फार्म से ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एंड दैट इज द गाइडिंग फोर्स फॉर दिस थिंग. So through this I will conclude my presentation, and thank you for this opportunity, and I will stop my sharing. I am now open to the question and answer session. Thank you, Susmit sir, for this wonderful presentation. And I'm glad that you share this in very layman's language so that everyone can properly understand a lot of critical things, but you are explaining in very simpler manner, and so that they can able to apply. Actually, it is in the practical way you are saying, as you are experiencing the same. So thank you for this. Yeah, so we start with the question and answer, which is again very important. Everyone, please unmute yourself and you can ask. Otherwise, you can also ask in the Q&A box. We will take these questions. Yeah, thank you. सर, जो नाइपर के बाद आप स्कोप्स जो बता रहे थे उसका स्लाइड एक मतलब अलग सेशन में एक बार और अलग से एक बार बता सकते हैं क्या, मतलब कभी? Sure. So wait, सो पोस्ट स्नाइपर करियर बाद यहाँ पे क्या होता है ना, जनरली मैं ये जो सेशन जो लेता हूँ, ये जो टॉपिक है पोस्ट स्नाइपर करियर बाद, ये जैसे आपका जीपैट का टॉपिक होता था, वैसे मैं नाइपर में मेरे जूनियर्स को लेता था उस टाइम में. दैट इज द एंटायर टॉपिक ऑफ दिस. सो क्या रहता है ना कि आफ्टर योर मास्टर्स इन नाइपर, सो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं. एक तो हायर स्टडीज के रहते हैं, आइदर यू गो फॉर पीएचडीज, ओके, और आइदर यू गो फॉर इंडस्ट्रीज. सो कमिंग टू द हायर स्टडीज, तो पीएचडी क्या होता है, पीएचडी अगर आप इंडिया में करोगे तो अलग चीज है, उसके अलग पाथवे जाते हैं, उसकी अलग एग्जामिनेशन आएगी. अगर आपको अब्रॉड में जाना है तो उसके अलग एग्जामिनेशन आएगी, और उस केस में मतलब चीजें अलग होती है. यार पाथवे मैटर्स. सो और मैं ये इस पे स्ट्रेस करना चाहूंगा कि एज यू माइट हैव सीन इन माय अर्लियर स्लाइड्स कि नाइपर के फैकल्टीज को वर्ल्ड में वैल्यू है. So the letter of recommendation which the NIPER faculty gives to you specifically, that is actually widely accepted, and that is actually highly valuable for you to secure higher positions in the other countries also for PhDs. So even for the jobs also, if you can say. So that is the case, like कि क्योंकि और वो किस वजह से डिपेंडेंट है, वो इस स्लाइड पे फिर से मेरा कनेक्शन है. मेरा प्रेजेंटेशन हर एक स्लाइड से लिंक्ड है. अगर आपका परफॉर्मेंस एट नाइपर अच्छा होगा तो ही आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फैकल्टी से मिला है. बिकॉज आई विल टेल यू एट द सेम टाइम, इम्प्रेसिंग नाइपर प्रोफेसर्स इज नॉट इजी.
किसी भी नाइपर प्रोफेसर को इम्प्रेस करना इट इज नॉट इजी, यू मस्ट हैव, देखिए सभी लोग जीपैट और नाइपर जेई को अच्छे अच्छे रैंक से क्वालिफाई करके आए हुए हैं, तो ये एकदम फिल्टर है कि आपके जैसे ही एकदम नॉलेजेबल, नॉलेज को अप्लाई करने वाले, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट वाले लोग आपको नाइपर में भी मिलेंगे। तो अभी आपको कंपटीशन नाइपर के अंडर से चला है कि भाई कि कौन सा स्टूडेंट उधर भी और अच्छा करेगा, नाइपर में भी परफॉर्म अच्छा कर पाएगा। सो उस केस में भी, और आई एम टेलिंग यू टू इम्प्रेस नाइपर प्रोफेसर इट इज नॉट इजी। आपके पास कुछ डेफिनेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स चाहिए ताकि आप इम्प्रेस कर पाओ उन्हें भी, और ताकि वो आपको रिकमेंड कर सके, बिकॉज बिकॉज इट इज लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देम कि if they are recommending you, then they are using their power कि okay, this student was under me and I know like this student is capable and he can perform his best in this thing, so इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है बहुत सारी। so that is why इनको इम्प्रेस करना it is not a very easy task, you need to have some extraordinary qualities। so coming back to that कि वही मैं बोल रहा हूँ कि इधर बात चेंज हो जाता है कि if your letter of recommendation बाद में आपको मिलेगा, then you go to abroad for PhDs or you go for the postdocs or even for job things। then coming to the industry, अभी ये सबसे कॉमन है ज्यादा, क्योंकि जो लोग इंडस्ट्री में आएंगे तो इंडस्ट्री में दो डिविजन आते हैं, एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड दूसरे आते हैं कंसल्टिंग इंडस्ट्रीज। तो दो तरीके की प्लेसमेंट आती है, दो तरीके की इंडस्ट्रीज आती है नाइपर में फॉर प्लेसमेंट। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जनरली क्या होता है कि इट इज लाइक फॉर फार्मास्यूटिक स्टूडेंट हम फॉर्मुलेशन R&D करेंगे, फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टूडेंट वो सिंथेटिक R&D करेंगे या एनालिटिकल R&D करेंगे, फॉर एनालिटिकल फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वो एनालिटिकल R&D में जाएंगे, DMPK में जा सकते हैं, and even medchem students go for DMPK, so drug metabolism and pharmacokinetics। then biotechnology वाले तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और पूरे कोई भी वैक्सीन डेवलपमेंट में जाएंगे उस तरह से। so it is like a core research, means you will be sitting or you will be doing your work in a laboratory, you will be dedicating your work for the research। और कंसल्टिंग में क्या होता है ना, कंसल्टिंग पोजीशंस आर डिफरेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशंस। तो ये कंसल्टिंग पोजीशंस इज द थिंग लाइक कि you are using your research knowledge to advise some of the things, like for example consulting industries are mostly IT industries, like if I can name some few, it is like a ZS, it is like IQVIA, Indigene, so Paraxel, all these are the consulting industries, and these consulting industries are the IT industries, these are service based industries। so ये industries के जो clients होते हैं they are the pharmaceutical। तो जनरली क्या होता है कि इसमें सेक्टर्स आते हैं, लाइक डेटा एनालिटिक्स आता है, बिजनेस एनालिटिक्स आता है, देन यू हैव सेक्टर्स लाइक साइंटिफिक राइटिंग और मेडिकल राइटिंग, फॉर व्हिच आई एम करंटली इन। तो ये सारे सेक्टर्स में क्या होता है कि यू आर यूजिंग योर research knowledge, you are using your research expertise, you are using your pharmaceutical therapeutic knowledge to guide the clients, means you are not doing your work in the labs, okay, but you are actually using your strategy, or you are at the advisory role to advise any pharmaceutical company or to advise anything। like for example you might be knowing कि एक ड्रग को रिसर्च करने के लिए, उसको मार्केट में लाने के लिए you have 15 years, 15 साल लग जाते हैं एक मॉलिक्यूल को लाने के लिए। so it is not like कि खाली R&D का ही रोल नहीं आता है, it is a consulting also रोल आता है कि वो 15 साल के एक प्रोसेस को एक्सपीडिएट करने में उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उसमें बहुत सारा डेटा को एनालाइज भी करना होता है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स डू डेटा एनालिसिस, ये सब करते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स वाले क्या करते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स वाले सोचेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर कंपनी को रिसर्च किस एरिया में फोकस करना है, बिकॉज जनरली क्या होता है कि लाइक इंडस्ट्री इज देयर फॉर लाइक टू अच्छे काम, चैरिटेबल ट्रस्ट आल्सो, बट इंडस्ट्री इज देयर टू पोजीशन द ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट इन आवर ओन कंपनी। so उस केस में बिजनेस एनालिटिक्स गाइड लाइक इन व्हाट एरिया वी शुड कंडक्ट द रिसर्च। मार्केट रिसर्च भी ऐसा होता है, इट इज दैट थिंग कि यू आर रिसर्चिंग अबाउट द करंट मार्केट, करंट डिजीज लैंडस्केप, कि किस डिजीज एरिया में अगर कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी सो इट विल बी अ गुड थिंग। so all these kind of things are like consulting। then coming to the scientific writing, which is my field currently, so scientific writing is also very vast, all this thing कि उसमें एक फील्ड में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं कि there बहुत सारे सब ब्रांचेस आते हैं कि you are using some, you are creating some documents for like scientific documents which are actually focused on therapeutic areas सारे भी, कि डिजीज को, ड्रग को मार्केट में लाने के लिए बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी लेने पड़ते हैं। so how will you prepare like ECTD modules, like you might be knowing कि क्लिनिकल स्टडी, क्लिनिकल रिसर्च करना पड़ता है, क्लिनिकल स्टडीज करने पड़ते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 करना पड़ता है। तो हर एक क्लिनिकल ट्रायल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द ICH GCP गाइडलाइंस। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स को बनाएंगे कौन, ये सब बना वही सकते हैं जो साइंटिस्ट है, मतलब जो हम है आफ्टर दिस थिंग। so that is why we are not sitting in the laboratories, but we are sitting in the, it is a desk job,
but we are guiding or we are using our research expertise to develop the molecules. So that is the like a major overview of the consulting. And trust me, I also like this question that you have the curiosity to gain like what is actually after NIPER. And when future, if you might be coming to NIPER, then you might be having your seniors who are guiding about this kind of thing. So I take entire 1 hour sessions to my juniors, like what is the post NIPER. That is the thing. So I hope I have answered your question. थैंक यू सर। सर और ये जैसे कि मैं तो 4th ईयर में हूँ, पर जो अभी 3rd ईयर वाले हैं वो मतलब आगे जाते हैं अदर कंट्रीज में, तो खुराना करके स्कॉलरशिप है, तो मुझे नहीं पता था, तो ऐसा कुछ और है क्या मतलब? See, for other countries, no, PhD के लिए stipend मिलती है. So don't use the term scholarship. Scholarship is not the accurate term. It is known as stipend. Okay. So आपको stipend मिलेगा in other countries for PhDs. Okay. So PhD के लिए usually their seats are funded. PhD seats are funded in abroad. So stipend तो मिलेगा, और इंडिया में भी मिलता ही है. It is given by DOP. अगर नाइपर में होगा तो DOP देता है. It is like a CSIR का पूरा रूल है कि what is the JRF, what is the SRF. लाइक जूनियर रिसर्च फेलो 2 साल के लिए, देन आफ्टर 3rd, 4th एंड 5th ईयर पीएचडी वो सीनियर रिसर्च फेलो में कन्वर्ट, तो उसके लिए भी स्टाइपेंड रहता है. तो इंडिया में भी रहता है और अब्रॉड में भी रहता है. सर या सर मेरा ये क्वेश्चन है, अगर सर कोई गेट अगर क्वालिफाई करते हैं तो क्या वो फ्रॉम नाइपर से वो सिर्फ एमटेक कर सकते हैं या फिर एमएस या एमफार्म भी कर सकते हैं? एमएस और एमफार्म भी कर सकते हैं. बट गेट का क्या होता है कि गेट का वो सब्जेक्ट्स है ना. सो इफ फॉर एग्जांपल इफ बीफार्म स्टूडेंट्स इफ क्वालिफाइज द गेट, देन इट विल नॉट बी इन द केमिकल साइंस, और इट विल गेट के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स कैटेगरीज है. गेट का जनरली बायोटेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा लोग कोई क्वालिफाई करते हैं. सो if you are pharma, no, then you don't need to look at the means you can qualify. It will be better for you to gain opportunities in IITs. For like IIT में कोई भी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट होगा, उधर अगर PhD करनी होगी, so then you can look for GATE. But अगर नाइपर में PhD करनी है, so it is like नाइपर JEE for PhD एग्जामिनेशन है अलग से, तो उसको क्वालिफाई. सर मींस अगर गेट क्वालिफाई करते हैं तो कोर सब्जेक्ट्स से एमफार्म या एमएस नहीं कर सकते हैं? But the thing is कि if you are in the pharma domain, then you will have to like कि GPAT पे focus करो, नाइपर पे focus करो. तो नाइपर will give you MS and all the things. या गेट के लिए आपको बायोटेक्नोलॉजी अलग से पढ़ना पड़ेगा. MS फार्म और M फार्म M.Tech फार्म करना है तो you have नाइपर JEE for this thing मास्टर्स जो एग्जामिनेशन. एंड सर फॉर प्रिपरेशन के लिए आपने जो कुछ बुक सजेस्ट किए थे, जैसे फॉर सूटिक्स इंडस्ट्रियल के लिए लैकमेन आपने फॉलो करने के लिए बोला था. सर मैं फॉलो करता हूँ सर, बट उसमें इतना कुछ है ना सर कि मतलब एक स्पेसिफाई नहीं कर पाता हूँ. मतलब बहुत कुछ है सर, क्या पढ़ना है टोटली मतलब ये चीज नहीं हो पाता है सर. मतलब बोर हो जाता हूँ वो पढ़ते पढ़ते. वही उसीलिए वो आई नो आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग. जब रेफरेंस बुक हम पढ़ते हैं ना, तो वो ऐसा ही होता है कि इट इज बिकॉज बहुत कुछ वास्ट रहता है. तो उस केस में लाइक आई विल सजेस्ट कि पूरे ये 2-3 घंटा कंटिन्यूस मत पढ़ा. यू विल हैव टू रीड फॉर 1 hour, यू गो आउट समवेयर, या फिर जो मैंने बताया कि रिसर्च चला पढ़ो उसी का. तो सपोज आपने फॉर्मुलेशन भी पढ़ा हुआ है, टैबलेट का फॉर्मुलेशन पढ़ा है, तो आप उसी टाइम में आपको अगर डिस्ट्रेस करना है तो आप नाइपर मोहाली या किसी भी नाइपर के वेबसाइट में जाओ, उधर फार्मास्यूटिक सेक्शन में क्या रिसर्च हो रही है वो देखो, और या फिर थोड़ा कहीं टाइम पास करके और फिर वापस से पढ़ो. इट इज द थिंग कि हमेशा दैट इज द थिंग कि पूरा डिस्ट्रेस होना इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इट इज लाइक सो मच वास्ट. एंड आई एग्री विथ यू कि बहुत कुछ मतलब वास्ट रहता है. सो द थिंग इज कि कंटिन्यूस मत बैठा कर कभी भी. आफ्टर 1 hour सर यू वो आर ये खासकर इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियल फार्मेसी लैकमेन से ही ज्यादा होता है मुझे. सर तो आप अपने प्रिपरेशन को जब आपने किया था सर, किस तरह से आपने प्रिपरेशन को, जैसे खासकर की सूटिक्स को लेके मुझे थोड़ा गाइड करिए ना सर. ठीक है. सो सूटिक्स को लेकर कैसा ना कि मैं एकदम टारगेटेड होता कि फॉर एग्जांपल अभी मेरे को अगर फॉर्मुलेशन पढ़ना है, सो टैबलेट्स का पढ़ना है, अगर मेरे को टैबलेट्स मैंने चैप्टर अगर उठाए, तो मैंने पहले से ही कंसेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है कि यूनिट ऑपरेशंस के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वो बायोफार्मास्यूटिक्स के सारे वो सब तो पहले से ही क्लियर होना चाहिए. तो अभी मैं अगर
फार्मास्यूटिक्स का अगर इंडस्ट्रियल फार्मेसी में स्पेसिफाई करूं तो वो क्या होता है, जनरली वी आर स्केलिंग अप. सो पहले मैं टैबलेट्स का टैबलेट पंचिंग मशीन देखूंगा, फिर टैबलेट पंचिंग मशीन के सारे टूल्स को एनालाइज करूंगा कि कौन कौन से टूल्स है, एंड आई विल नोट इट डाउन. मैं अपनी हमेशा रेफरेंस बुक पढ़ते टाइम में मेरे पास एक नोट तो होती ही थी. वो मैं हमेशा जो कुछ भी मेरे को ऐसा लगे ना कि ये मैं भूल जाने वाला हूँ या ये याद रखने वाली चीजें, आई यूज्ड टू नोट इट डाउन देयर. और वो नोट करने के बाद में जब मेरा पढ़ना हो जाएगा तो मैं फिर से वो नोट भी पढ़ूंगा और फिर से वो बुक में भी देखूंगा कि कुछ मिस तो नहीं हुआ है. आई विल कंपेयर द नोट्स एंड दिस थिंग, और वो बार बार आई विल रीइंफोर्स अपॉन माई सेल्फ. अगर मैंने आज पढ़ा है तो मैंने नेक्स्ट सैटरडे को मैं फिर से वो रिविजन करता रहूंगा. ऑलवेज वो बहुत नेसेसरी है कि हमेशा रिटेंशन रखना चाहिए. मीन्स हम लोग एक ही इंफॉर्मेशन को रीइंफोर्स करने के लिए आना चाहिए. बाय एक एक वीक का टाइम देते रहो और वो बार बार वो रिवाइज करते रहो. जैसे आप 2-3 वीक में भी आप वो रिवाइज करोगे ना तो आपके अंदर वो पूरा बैठ जाएगा. एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग विच आई हैव मिस्ड ड्यूरिंग दिस थिंग, एक प्रेजेंटेशन में मेरी एक स्लाइड भी थी कि याद कैसे उसके प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग एक थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल, बट देयर वाज वन इमेज ऑन दैट स्लाइड, वो अभी मुझे याद आया. तो क्या था कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. अभी आप अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहोगे नाइपर का, कोई भी मतलब पुराना पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करते रहोगे तो उसमें आप कभी मिस्टेक्स तो करने ही वाले हो. फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग, यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 2 3, उसमें आपने अगर दो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने रॉन्ग कर दिया तो आपने रॉन्ग करने के बाद जब आप एनालाइज करोगे ना वो क्वेश्चन को कि क्यों रॉन्ग है, तो उसको पहले देखो कि करेक्ट आंसर क्या है और व्हाई आई हैव मेड द मिस्टेक. और वो मिस्टेक पता होने के बाद में, पता चलने के बाद में फिर से वही टॉपिक पढ़ो जिसमें आपने मिस्टेक की हुई है. एंड थर्ड पॉइंट विच आई विल सजेस्ट यू इज मोस्ट इंपोर्टेंट कि वो मिस्टेक को एक अपने एक मिस्टेक नोटबुक्स रखो अलग से. मतलब यू शुड हैव वन बुक like for writing your theory notes and another book which is known as the mistake notebook. So mistake notebook में ना आप सारे मिस्टेक करोगे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो में, वो मिस्टेक्स उधर नोट डाउन होने चाहिए. और वो मिस्टेक का नोट डाउन भी कैसे करना है, जस्ट ये लिखना नहीं कि दिस क्वेश्चन वाज रॉन्ग. आपको राइट आंसर क्या है एंड व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द राइट आंसर, आपने वो मिस्टेक क्यों की है. सो वो आपको नोट डाउन करके रहना चाहिए. एंड दैट मिस्टेक बुक आल्सो यू रिवाइज इन 1 मंथ. मतलब एक मंथ में कोई एक दिन रखो, लाइक फॉर एग्जांपल 30th of every month. तो 30th of every month you keep 1 day book for the revising mistake mode. आपका कैलेंडर ऐसे बुक होना चाहिए कि what you are going to do on the 30th of this month, what you are going to do in the week 1 week 2. हर एक मंथ में आपका एक प्लान रेडी होना चाहिए कि week 1 में क्या करोगे, week 2 में क्या करोगे, 3 में करो. एंड कमिंग टू योर पॉइंट कि इतना बड़ा होता है तो कभी कभी मतलब वी आर गेटिंग ड्रेन आउट. सो और भी उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किससे डिस्ट्रेस होना है. एक तो मैंने बोला कि थोड़ा बाहर घूम के और फिर थोड़ा नाइपर का रिसर्च करो. सेकंड पॉइंट है कि आप क्वेश्चन अप्लाई करो. अभी पढ़ते पढ़ते ना आदमी बोर हो जाता है. मतलब आई वाज आल्सो गेटिंग बोर्ड, लाइक व्हाइल रीडिंग अ लॉट फॉर 3-4 आवर्स आई वाज रीडिंग, आई एम गेटिंग बोर्ड. सो उस टाइम में मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे मजा आता है. बिकॉज लाइक इट इज लाइक वी आर चैलेंजिंग आवरसेल्फ. कोई अपने को चैलेंज दे रहा है कि ये सॉल्व करो ऐसा करके. So once like कि जब कोई अपने को चैलेंज कर रहा होता है तो अपने को मजा आती है. So that is the attitude. So वो एटीट्यूड रखो तो उससे मतलब सब वो अपना स्ट्रेस पूरा ये हो जाए और उससे कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि you are doing it right. And if something you are doing it wrong, you have the mistake notebook by your side. सर एंड वन थिंग ऑल्सो सर, एक्चुअली कुछ सब्जेक्ट्स जैसे फार्मा में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं कंपाइल करके एक सब्जेक्ट एक एक टॉपिक्स बनाए हुए हैं. सर अगर हम कोई टॉपिक्स पढ़ते जैसे कॉलेजी हो गया, मेडकेम हो गया, किसी टॉपिक में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आता है ना तो सिर्फ उसी को पढ़ने का मन करता है, बाकी सब्जेक्ट को छूने तक का मन नहीं करता. सर इसको कैसे सॉल्व करे इस प्रॉब्लम को? That is the point. इसी वजह से मैंने पिन अल्टीमेट स्लाइड में भेजा था कि यू हैव टू गो टुवर्ड्स द कोम शेप पर्सनालिटी. अगर आप आई शेप पर्सनालिटी में ही रहोगे तो आपका नहीं होने वाला. इसलिए दैट इज माय आंसर टू दिस कि आपको कोम शेप पर्सनालिटी पे जाना है. और उससे आपको अगर पता होगा कि देखिए इसका आंसर यही है कि कॉर्पोरेट में कोई भी ना एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज वाला आदमी आगे नहीं जाता है. आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस. सिर्फ किसी एक पर्सन है जो कि सिर्फ खाली डायबिटीज में ही एक्सपर्ट है. ओके, ही इज वेरी एक्सपर्ट इन डायबिटीज. तो उसको अगर कोई दूसरे थेरेपी एरिया के अगर ड्रग मॉलिक्यूल्स के डॉक्यूमेंट हैंडल करने दे तो वो नहीं करता. इट इज नॉट गोइंग टू बी गुड. वो क्या कहा जाएगा कि ही इज अ पर्सन एक्सपर्ट इन डायबिटीज, लेकिन आगे का क्या? तो अगर उसको दूसरे कभी अगर वो पर्सन नहीं हुआ डायबिटीज वाला पर्सन और अगर उसको दूसरा कोई थेरेपी एरिया हैंडल करने को दे तो वो नहीं कर रहे. दैट इज नॉट करेक्ट. और ऐसे पर्सन दे वोंट प्रोग्रेस मच आगे भी फर्दर.
So you need to have expertise in multiple domains or you need to be a comb shape person. और जब कभी ऐसा आएगा ना कि वो एक में इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, एक में पढ़ते आ रहे, तो उसके लिए टाइम बाउंड रखो कि आज मैं एक दिन खाली इसमें स्पेंड करूंगा। और वो हमेशा अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिसको इंटरेस्ट है ना, जिसको आता है वो आदमी वही करता आता है, लेकिन दैट इज यू हैव टू समथिंग, यू हैव टू स्टॉप दैट। और आपको स्टॉप करने सोचना पड़ेगा कि आगे के भी सब्जेक्ट्स है दूसरे, एंड मेजर उसका आंसर तो मैं जीपैट के लिए तो क्लियर है कि एक ही सब्जेक्ट आने वाला है, बट आई विल टेल यू इन द कॉर्पोरेट, मैं आपको 5 साल बाद जब आप इंडस्ट्री में जाओगे इन अ बिग इंडस्ट्री, देन उसमें ये बिहेवियर चलने वाला है नहीं। तो ये आप क्लियर रखो अपने से कि मेरे को आगे भी ऐसा एक ही सब्जेक्ट में एक्सपीरियंस में रहना नहीं है। तो इसलिए ऑल दिस एटीट्यूड यू नीड टू डेवलप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो और टाइम रखो कि एक ही घंटा, मतलब एक ही दिन में मैं इस पे स्पेंड करूंगा, मैं इससे ज्यादा स्पेंड नहीं करूंगा ऑल टाइम। I have also multiple tasks in this thing. Coming to my experience, मेरे पास एक दिन में ऐसा टास्क रहता है कि ओके दिस टास्क, दिस प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट। मेरा एक हमेशा एक टाइम रहता है कि ये प्रोजेक्ट पे मैं इतना ही 2 ही घंटे स्पेंड करूंगा, उसके बाद मुझे आई विल हैव टू शिफ्ट टुवर्ड्स द अदर थिंग। सो दिस इज लाइक अ टाइम मैनेजमेंट स्किल। सो ये आना चाहिए एंड ये यू नीड टू प्रैक्टिस इट, सो देन ओनली यू कैन। सर नाइपर के अलावा मतलब और भी कॉलेजेस एग्जाम खुद कंडक्ट करवाते हैं ना, तो वो कौन कौन से? हाँ, IITBH। तो पहले उसमें क्या से होता था, कौन कौन से दिलाना चाहिए? सी अभी क्या चीज है कि मेरे टाइम पे क्या था, मेरे टाइम पे IITBH वाज आल्सो फोकसिंग ऑन जीपैट ओनली, बट अभी थोड़ा सा मतलब मैंने देखा है कि थोड़ा ट्रेंड सेट हो कि IITBH कंडक्ट्स इट्स ओन एग्जामिनेशन, सो यू कैन गिव इट लाइक यू कैन। और दूसरा तो होता है कि बिट्स भी होता है, बिट्स के भी टेस्ट होते हैं, लेकिन बिट्स की टेस्ट तभी होती है इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड इन जीपैट। बिट्स पहले जीपैट ही लेता है, और इफ द स्टूडेंट्स हु आर नॉट क्वालिफाइड इन जीपैट उनके लिए खास करके सीट्स रहती है, तो दैट इज टेकन बाय बिट्स HD टेस्ट। सो द बिट्स हायर डिग्री टेस्ट, तो वो जो टेस्ट रहती है वो आप दे सकते हो। बट द थिंग इज कि जीपैट कैंडिडेट्स आर मोर प्रिफर्ड इन बिट्स थिंग, एंड IITBH आप ट्राई कर सकते हो। So always keep options, multiple options open रखो, but the aim should be one thing. So you should have plan B, plan C. ये नहीं हुआ तो क्या, but make sure कि वो प्लान रखे, उसका मतलब ये नहीं कि एम के दूर भटक जाना है। एम आपका जो पहला क्लियर है वो रखो। सर अगर कोई पर्सन थर्ड ईयर में क्वालिफाई कर जाते हैं जीपैट, तो अगर वो सर फोर्थ ईयर में तो कट ऑफ अलग होंगे, तो अगर वो फोर्थ ईयर में कट ऑफ अचीव नहीं कर पाया, क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो वो थर्ड ईयर में जो क्वालिफाई किया था, क्या उसका वो जो सर, क्योंकि फोर्थ ईयर का कट ऑफ अलग रहे, तो एडमिशन उसके बिहाफ में वो ले सकता है क्या? Regarding this thing, I am not aware actually. So sorry for that. This question I am not aware right now. Because मेरे टाइम पे ऐसा क्या था कि अभी चेंज हुआ है, अभी चीजें चेंज हुई। जैसे तुमने बोला कि थर्ड ईयर में इफ एनीवन क्वालिफाइज, इट इज लाइक कि फोर्थ ईयर में वो थर्ड ईयर के एडमिशन के बेसिस पे ले सकता है। बट द थिंग ये इज PCI अभी ही की है, थर्ड ईयर कैन डायरेक्टली। यस, वो अभी उसके केस में अभी और कोई गाइडेंस मैंने अब तक पढ़ा नहीं है कि ऐसे कंडीशन में क्या होता है। बट हमारे टाइम पे थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अपीयर, बट स्टूडेंट मस्ट बी इन द फोर्थ ईयर, और फोर्थ ईयर के बाद से वो स्कोर कार्ड वो 2 इयर्स तक वो वैलिड रहेगा फॉर दिस थिंग। तो ऐसा हमारे टाइम पे था। सो सॉरी फॉर दैट, दिस क्वेश्चन अब तक जनरली कोई गाइडेंस नहीं आया इस केस पे। So would you Okay, please sir. elaborate about the field pharma MBA? Yeah, so pharma MBA जनरली क्या होना है कि आफ्टर दिस थिंग, मतलब कि फॉर फार्मा MBA आफ्टर क्वालिफिकेशन ऑफ दिस, मतलब नाइपर फार्मा MBA के लिए एक तो एग्जाम रहेगी जो नाइपर जेई, जो अभी तुम लोग सब लोग मतलब अपियर करोगे। दूसरा एक रहेगा GD एंड PI, मतलब ग्रुप डिस्कशंस एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो वो भी दोनों चीज रहेगी। सो वो नाइपर जेई एग्जाम और GD और PI उन दोनों के एग्रीगेट मार्क्स जो कन्वर्ट करके जो ऑल इंडिया रैंक रहेगा, उसका एडमिशन, उससे फार्मा MBA का एडमिशन होगा। तो फार्मा MBA में जनरली क्या, इट इज ऑल फॉर द मैनेजमेंट साइड, मतलब कोई बिजनेस एनालिटिक्स में जाना चाहेगा, कोई मतलब जनरली दे आर लाइक कि दे आर मैनेजिंग द पर्सन। ऐसा बात नहीं है कि MS वाले कभी मैनेज नहीं कर रहा है, बट फार्मा MBA स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस एनालिटिक्स, कि तुम बिजनेस एनालिटिक्स में जाओ, तुम मार्केट रिसर्च में जाओ, तुम मतलब डेटा एनालिसिस में भी जाओ, ये सब काम करने के लिए फार्मा MBA इज द कोर्स। एंड फार्मा MBA यूजुअली इट इज ऑन फोकस्ड ऑन द फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, कि आप पूरे इंडस्ट्री का रिवेन्यू कैसे ड्राइव कर पाओगे।
उनकी ट्रेनिंग, उनका सिलेबस उसी तरीके से रहता है कि हाउ यू आर फोकसिंग ऑन द बिजनेस और हाउ यू आर बिजनेस ओरिएंटेड. दैट इज व्हाई पीपल यूज्ड टू से फॉर फार्मा एमबीए कि बिजनेस एनालिटिक्स इज एक्चुअली इट इज अ फील्ड फॉर फार्मा एमबीए. एंड अनदर फील्ड इज अ मार्केटिंग कि आप कैसे लाइक इफ यू आर अ मेडिकल साइंस लाइजन कि किस तरह से मार्केट करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू ड्राइव दिस थिंग. सो ऑल दिस कम्स अंडर द फार्मा एमबीए. All business oriented, how to drive company's revenue or how to position a product in a brand by using this. ओके सर, तो प्लेसमेंट कौन से एरियाज में पर्टिकुलर होते हैं, लाइक फार्मा एमबीए स्टूडेंट्स के नाइपर में? See, so pharma MBA students के placement बहुत अच्छी है. It is like a very good record of placement. So generally placements business analytics में होती है, market research में होती है. Then उस केस में कभी कभी कोई data analysis में भी चला जा सकता है, उसमें placement होती है. And then marketing में भी, core marketing में भी placement. So all the like there might be core pharma industries also, and also there might be consulting companies. सर पैकेजेस वगैरह बताइए ना सर, MS M Sorry, Pharm और that Pharm में. yeah. So your question is correct, curiosity, but the thing is ki we are not able to disclose the package. It is against the policies of the thing. So for this, I can tell you, you can refer the brochure or placement brochure of the NIPER for all this data. They might give you the average packages and all. This is against the things, like we cannot discuss generally for we cannot discuss those kind of data. Yeah, Sir, exactly. or average, on an average you can tell. Average also, that also you can find it in the placement brochures of the NIPER. Okay. You can Okay, that sir. is why I told you, like be active on the LinkedIn. So right from the B Farm stage only, you be active on the LinkedIn. You will learn a lot from there. So सर थ्रू आउट द बी फार्मा, मतलब बी फार्मा ही नहीं, मतलब लाइफ में भी और मतलब क्या क्या स्किल्स हम लोग को डेवलप करना चाहिए? very great question. So the thing is कि मैं अभी भी मतलब from my experience I say like कि even NIPER freshers they come here. Okay, from the campus recruitment they come. I know they are very much skilled. They are very much good in the science. They are very much good in the research. लैब में 2-2 बजे तक बहुत घंटे लैब में बिठा के पूरे सब कुछ. They are very extreme. They are extreme scientists. But क्या होता है ना कि कोई पर्सन they are very minimum. ऐसा सारे नहीं है, मोस्टली दे आर वेरी इक्वली टैलेंटेड. बट कोई पर्सन ऐसा होता है कि दे आर ओनली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज ही उनके पास होती है. बाकी कुछ भी चीजें मतलब दे आर लैकिंग इन कम्युनिकेशन, दे आर लैकिंग इन इंटरेक्शन, दे आर लैकिंग हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स इन द फ्रंट ऑफ द इंडस्ट्री. दे आर लैकिंग द समटाइम्स की कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज का प्रॉब्लम हो जाता है, एनालिटिकल स्किल्स नहीं रहती. हाउ टू हैंडल पीपल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब लोगों को लगता है कि एमबीए करके ही पीपल मैनेजमेंट आता है, लेकिन इट इज नॉट लाइक दैट. इवन आप अगर कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे, आप व्हेन यू आर गोइंग अबाउट द हायरार्की, अभी क्या स्टार्टिंग यू विल बी ज्वाइनिंग एज अ फ्रेशर. ओके, आप अगर आपके करियर के हिसाब से आपका वो भी डिपेंड करता है कि आपका करियर किस हिसाब से चल रहा है, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन द इंडस्ट्री, हाउ यू आर परफॉर्मिंग देयर. ओके, सो आप उधर परफॉर्म करने के बाद आपका जब डेजिग्नेशन बढ़ जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि देयर विल बी सम पीपल हु आर वर्किंग अंडर यू. So you need to manage all these kind of people. There will be some people who you will be leading the project. Then I will not tell that they are working under, they are working for you, because it is your project and it is your responsibility to, you are the leader of the project. So उस केस में वो सब स्किल्स है, पीपल मैनेजमेंट भी स्किल्स चाहिए कि हाउ टू एम्पथाइज विद द पीपल, कि हाउ टू एम्पथाइज विद द पीपल, कि उनका पर्सपेक्टिव समझना, उनका इमोशन समझना. हम जब उनको काम अलॉट करेंगे, देखिए अलॉट करने का तो वो आगे की चीज है, पहले तो हम लोग को खुद को काम करना आना चाहिए इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ देयर करियर. ओके, सो वो सब मेन है कि वो अगर आप आओगे, वो अच्छे तरह से करोगे, देन योर डेजिग्नेशन विल गेट इंक्रीज. ओके, डेजिग्नेशन पोस्ट बढ़ेगी इन द नॉर्मल सेंस. तो आपकी पोस्ट बढ़ेगी, यू विल हैव सम पीपल like you will be leading some projects and you will be having some people working with you और दिस थिंग. तो उन लोग को अभी क्या रहेगा, अभी आपका परफॉर्मेंस है वो आपके हिसाब से डिपेंड नहीं रहेगा, वो डिपेंड रहेगा जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, जिससे आप काम करवा रहे हो, उससे कैसा रहे. तो पीपल मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, कि आपको लोगों को मैनेज करना आना चाहिए. विदाउट, अगर जनरली सी लीडर्स की बातें सब नहीं सुनेंगे, मतलब लीडर्स की बातें नहीं, इन द सेंस आई थिंक आई विल जस्ट रिफ्रेश दिस, कि सभी लोग ना
मतलब सभी पर्सन की बातें सब नहीं सुनते, लीडर्स की बातें सब सुनते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर द लीडर्स। क्योंकि अगर आप उस पोजीशन में होगे, रिस्पेक्टेबल पोजीशन में होगे, और रिस्पेक्टेबल पोजीशन से कुछ नहीं आता, इफ यू आर इन द पोजीशन, आपको उस तरीके से वो पोजीशन की डिग्निटी भी रखनी चाहिए, आपको लोगों को समझना आना चाहिए, लोगों के पर्सपेक्टिव से समझना आना चाहिए, दैट इज नोन एज द इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो ही आप लोगों को असाइन कर पाओगे और लोग आपकी बातें सुन पाएंगे। और व्हेन यू आर एट द हायर पोजीशन, उस केस में क्या होता है, व्हेन यू आर लीडिंग द प्रोजेक्ट्स, आपका परफॉर्मेंस खाली आपके काम के ऊपर नहीं रहता, आपका परफॉर्मेंस जो आप दूसरों से जो काम करवा रहे हो उनके ऊपर भी रहता है, तो वो आपकी बातें कितना सुनेगा वो इम्पोर्टेंट है। सो यू, आप लोगों को आपके साथ काम करने में मजा आना चाहिए, यू हैव टू डेवलप सच काइंड ऑफ एटीट्यूड कि मतलब कि इफ दिस इज द पर्सन देन हमें यार मजा आ रहा है, लाइक वी आर फीलिंग गुड टू वर्क विथ हिम, एंड एज अ लीडर यू विल हैव टू एम्पथाइज विद द अदर, आपको उनकी भी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना होगा, आपको माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करनी होगी, वो सब इट इज अ वेरी डिटेल टॉपिक। सो जस्ट एन ओवरव्यू आई गिव कि ये सब काम के साथ साथ ये सब पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, एम्पैथी, एडवर्सिटी क्वेश्चन जो मैंने पहले ही बोला था कि कैसे एडवर्स सिचुएशंस को हैंडल करना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आगे व्हेन यू आर पासिंग फ्रॉम नाइपर, यू आर गेटिंग एट अ हायर डेजिग्नेशन, आपके पास लोग प्रॉब्लम लेके आएंगे कि यार दिस थिंग इट इज लाइक वो, क्योंकि यू आर एट दैट पोजीशन, लीडरशिप पोजीशन, इफ यू आर लीडिंग द प्रोजेक्ट, लोग आपके पास प्रॉब्लम लेके आएंगे कि यार ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ये क्या करे, सो यू शुड नॉट बी, यू शुड बी कैपेबल इनफ टू गाइड देम कि हाँ ये ऐसा करो, ये सॉल्व हो जाएगा उस तरीके से। तो दैट इज द थिंग कि सिर्फ इसके साथ ये सब भी चीजें भी रिक्वायर्ड होती है, एंड दैट इज द थिंग व्हिच पीपल, सम पीपल आर लैकिंग इन दिस थिंग, एंड दे आर लाइक, उस वजह से फिर दे आर नॉट प्रोग्रेसिंग हायर, एंड ऑलवेज कीप द एम कि कम एज में ऊपर तक पहुंचना, योर एज शुड बी लेस एंड योर डेजिग्नेशन और दैट शुड बी हायर, वो एम हमेशा राइट फ्रॉम द एकेडमिया। सर और मतलब जैसे ये इंडिया का ही है, मतलब एजुकेशन सिस्टम हमारी कॉलेज का देख ले, पढ़ाई वढ़ाई कुछ होता नहीं, 40,000 फीस लेते हैं, और अभी जीपेट का भी 3,500 फीस कर दिए, पर मतलब और उसी से उनका स्कॉलरशिप भी बन रहा है, मतलब ये सब ठीक कैसे होगा, मतलब करना है अगर इसको तो कौन से पोस्ट में होना चाहिए? See, that is a government decision. So that is the thing. Like those who are sitting, I cannot comment on that thing. अभी ठीक करना है, that is a government position or in the this thing, or government की भी क्या चीज है? You told about the college administration, so I cannot comment on this kind of thing. So you need to, I can tell you focus on your studies. That is the major thing. And once I can tell you, once you're done in the NIPERs or NIPER में भी अच्छा performance करोगे, then I can tell you this kind of thing I can tell you कि आप अभी अपने पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई पे इतना फोकस करो, you aim something, you be at that position. Financial चीजें का कभी भी prospects आएगा नहीं. Even I am from a small town of that. But now I am sitting at this position, and I can tell you कि एक बार सब कुछ मतलब चीज सभी आप मेहनत करोगे, so that is the thing. See, stress तो हमेशा आने ही वाला है, सिर्फ चीज ऐसी है कि मतलब it is not like मैं अभी I am sitting at that position, this position, so I do not have stress मुझे भी है, but it is the thing कि आप किस केबिन में बैठ के एकदम स्ट्रेस ले रहे हो कि आप नॉर्मली प्रोडक्शन लाइन में काम करते हैं या कि उसी लाइन में काम करके स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर if you are normally taking stress while going on a bike, or you are using some lavish big sedan or SUV car and you are going to office and taking stress. So ये इन दोनों में बहुत डिफरेंस है. और ये कैसे होगा? If you are starting from the B farm, right from the B farm, अगर आप डिटरमाइन रहोगे कि आपको आगे ऊपर बढ़ना है and you need to like, अगर आप ये एम रखोगे ना, so I can tell you कि आप बड़े बनोगे, so there will be no financial constraints with this thing. तो फाइनेंशियल का चीजें ये सब अभी उस टाइम में स्टूडेंट्स के लिए रहता है, स्पेसिफिकली दोज हु आर फ्रॉम द मिडिल क्लास बैकग्राउंड. आई वाज आल्सो फ्रॉम द मिडिल क्लास बैकग्राउंड, सो दैट इज व्हाई आई कैन रिलेट यू कि उस टाइम में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइम में खुद को डेवलप करना, खुद को एक पोजीशन पे लाना बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हेन यू आर एट दैट पोजीशन ना, सारे कंस्ट्रेंट आपके निकल जाते हैं, तभी आपको याद होगा कि ओके एट दैट टाइम आई वाज नॉट हैविंग दैट मच इवन मनी टू फुलफिल माय दैट काइंड ऑफ नीड, एंड नाउ सी नाउ एट व्हाट पोजीशन they are. So that should be the aim of the persons. It was a good question.
So that question was regarding this thing, like changing this thing. So ultimately, वो तो किसी के हाथ में नहीं है. You are not with anybody's hand, and that is like no one we can also blame from that. Not even government, not even किसी भी blame करने की जरूरत नहीं. Even the government is doing at its best. कि सारे इंस्टीट्यूट इतने रखे हुए हैं, इतने उस तरीके से रिसर्च में इन्वेस्ट किया गया है. I will tell that it is like doing at its best. Like they are giving us the institutions and their facilities at the NIPER. If you can say like I can tell you of my thing, एक NMR की cost, if you can sell एक NMR spectra करने की cost, it is like 8,000 rupees for one sample, and we all used to give around 60-70 samples in a month. Now you can see from where this money all comes. So it is like it is the beauty of NIPER कि उसमें funding, it is that thing, and government is fully like it is encouraging कि funding उस तरीके से है that there is no such problems. कभी भी ऐसा ये नहीं है कि you cannot submit the NMR samples more उस तरीके से. So it is like never the case. So and other thing is that we cannot so let me complete. We cannot actually blame any other thing or this thing. You need to focus on yourself first and then grow at that other portion. Everything will be solved. Okay, sir. सर So what? हम लोग सेमेस्टर्स में जितने भी सर सेमेस्टर्स में प्रैक्टिकल्स करते हैं सर, इन अ बैच ग्रुप में करते हैं, बहुत कुछ सर सही से नहीं सीख पाते हैं सर. इसका इम्पैक्ट हम लोग को नाइपर में पड़ेगा ना सर? नहीं, जनरली क्या होता है ना कि बट चीज ऐसी है कि सीख नहीं सकते आप, ठीक है, लेकिन मतलब ट्राई करो कि बैच में अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो, एवरीवन डज इन द बैच, तो बैच में कर रहे हो तो भी बैच में आप इनिशिएटिव लो, यू लीड दैट बैच कि ठीक है ये प्रोसीजर है, आप पहले से ही पढ़ के आओ कि व्हाट इज द प्रोसीजर एट द 1 डे प्रायर बिफोर द प्रैक्टिकल. आप पढ़ के हो कि ठीक है ये करना है, उधर जाके फिर आप ग्रुप में ही इतना लीड रहो, यू लीड द ग्रुप. If you are not able to, तुम ही खुद लीड बनाओ ग्रुप के, एंड यू एक्चुअली ड्राइव ऑल द अदर स्टूडेंट. तुम सिखाओ स्टूडेंट्स को कि किस तरह से प्रैक्टिकल करना है. सो एंड नेक्स्ट रिगार्डिंग ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि उसका इम्पैक्ट नाइपर में. सो नाइपर में उसका मेजरली ऐसा इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता नहीं है, बिकॉज नाइपर के जो प्रैक्टिकल होते हैं, दिस बीफार्म प्रैक्टिकल टोटली अलग होते हैं, नाइपर के प्रैक्टिकल टोटली अलग होते हैं. बिकॉज नाइपर के प्रैक्टिकल्स मतलब इट इज ऑल द रिसर्च ओरिएंटेड, तुम खुद क्वेश्चन ढूंढ रहे हो रिसर्च की. बीफार्म में फॉर एग्जांपल मेडिसिनल केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल अगर मैं बोलूं तो जनरली आपको ड्रग सिंथेसिस के कोई प्रैक्टिकल होंगे नॉर्मली मेडिसिनल केमिस्ट्री में, लेकिन नाइपर में क्या प्रैक्टिकल है, नाइपर में आपको खुद की रिएक्शन सेटअप करनी है, आपको मालूम नहीं है कि क्या पढ़ने वाला है आगे भी. इधर मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको मालूम है कि बीफार्म में कि क्योंकि वो एजुकेशनल पर्पस के लेके हो, वो रिएक्शन वेल एस्टेब्लिश है. नाइपर में आप रिएक्शन खुद सेटअप कर रहे हो, खुद कैटलिस्ट कौन सा यूज करूँ वो देखोगे, खुद रिएक्टेंट्स क्या यूज करूँ, खुद का स्ट्रक्चर मालूम होगा कि ये प्रोडक्ट ऐसा चाहिए मुझे, तो उस वजह से मैं रेट्रोसिंथेटिक पाथवे से मैं पीछे रहूंगा कि रिएक्टेंट्स क्या यूज करूँ. और वो रिएक्शन कहीं पे भी रिपोर्टेड नहीं होती जर्नल, मतलब जर्नल से आप रेफरेंस लेते हो, आप कोई रिसर्च पेपर से रेफरेंस लेते हो कि ये सिमिलर रिएक्शन ऐसे ही कंडक्ट किए गए थे, लेकिन आप कोई दूसरा सबस्ट्रेट के लिए कंडक्ट और दूसरे सबस्ट्रेट के लिए कंडक्ट करोगे, आप प्रोडक्ट और हाइपोथेसाइज करोगे ये रिंग बनेगी, ट्रायजोल रिंग बनेगी. अब वो ट्रायजोल रिंग बनेगी कि नहीं बनेगी वो आपको पता नहीं है, वो बनेगी आपको लग रहा है, लेकिन वो आप देखोगे एनएमआर, मास और आईआर तीनों और यूवी विजिबल से, उससे सबसे आप स्ट्रक्चर निकालोगे कि हाँ भाई ये जो मेरी जो हाइपोथेसिस है कि ये स्ट्रक्चर बनेगा वो एक्चुअली बन चुका है ऐसे. इसलिए नाइपर के प्रैक्टिकल अलग होते हैं, इसमें नहीं बनेगा इम्पैक्ट. और यू विल बी ट्रेन्ड फ्रॉम योर सेकेंड ईयर मास्टर स्टूडेंट्स और पीएचडीज फॉर दिस थिंग. लैब स्किल्स बहुत डिफरेंट करते हैं नाइपर के और बीफार्म के. एंड बीफार्म में आप प्रैक्टिकल एकदम ऐसा सीरियसली भी नहीं लेते होगे, नाइपर में बहुत सीरियसली लिया प्रैक्टिकल. So, what are the skills of the courses we should do in BPharm while in BPharm? Sorry, I didn't get your question. What courses you mean? So, like there are the courses there. Some institutes are providing, like they teach us medical coding, pharmacovigilance, nanotechnology, sort of that. So, yeah, so I will go ahead. So all such courses which are provided, you can do such courses. See, the skills required आप तो अभी start कर रहे हो, right from the BPharm. Generally, these are the jobs which are like, for example, for my field only, medical writing. Generally, medical writing we prefer students from the master background, and that too also from the tier this thing.
But the thing is, there are many, we prefer in the sense many industries, many industries prefer such thing. So the thing is, like from the B Farm also, some students, some industries prefer the B Farm, but generally the choices are less. Like from masters, from big industries out there, we generally they prefer master students, and that too, and it is good. Like if you are from right from the B Farm, you are learning these courses. It is actually good for this, and the skills required means you will be taught in that course only. What will be the skills, and what are, there is no like prerequisite skills. Prerequisite skills is like use excel in a subject, because for any course, for example, for medical coding also, for medical writing also, for data analysis also, you need to know the B Farm subjects. You need to have subject matter expert. That is the prerequisite course at your level. Okay, sir. Thank you. सर आप अपना नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? Sorry, that is not possible. Generally, I don't provide. You can get in touch with me on LinkedIn or any other. Okay, sir. Okay. Any other queries, students? सर वन क्वेश्चन सर. Yeah. सर आप जीपैट और नाइपर के लिए नाइपर में तो मेनली आप डिफरेंशियल मतलब तैयारी वगैरह करते होंगे सर. कैसे उसको थोड़ा सा एक बार बता सकते हैं? Okay, means do you mean like कि GPAT मतलब GPAT का प्रिपरेशन करते वक्त में आप नाइपर का भी कैसे करोगे, अकाउंटिंग द डिफरेंसेस, इज दैट? यस सर. सो सी, मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, इसलिए तुम्हें दिखा होगा मेरे प्रेजेंटेशन में, मैंने जीपैट के लिए एक्चुअली मैंने प्रिपेयर किया ही, आई एक्चुअली फोकस माई सेल्फ फॉर नाइपर, क्योंकि मेरा एम क्लियर था. मैं एक्चुअली आज पूरा स्लाइड शेयर आपका देख रहा था, जो भी पीपीटी था उसमें सर आपने टोटली बताया नाइपर के बारे में. करेक्ट. मतलब बेसिक्स पूरा था उसमें, पूरा कि कैसे कैसे किया. तो सर अगर कोई बंदा नाइपर के लिए कर रहा है, हम लोग तो सर नॉर्मली सर जीपैट के लिए ही कर रहे हैं, तो नाइपर में सर क्वेश्चंस इधर हम लोग का क्या होता है सर, तो 1 आवर घट जाता है, 2 आवर्स में ही मेनली क्वेश्चंस वगैरह ज्यादा रहते हैं. तो एज अ प्रिपरेशन फॉर नाइपर हम लोग को क्या, जो गलती हम लोग जीपैट में करते हैं वो नाइपर में नहीं करना चाहिए? दैट इज द थिंग, आई विल टेल यू, गो बाय रिवर्स. प्रिपरेशन नाइपर के लिए करो, जीपैट का आसानी से हो जाएगा. दैट इज द थिंग, क्योंकि नाइपर में बहुत सारे, देखिए नॉन फार्मा का भी पार्ट कितना आ जाता है. टाइम स्ट्रेटेजी मैंने 36 सेकंड्स में एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते. तो इवन इफ यू आर सॉल्विंग जीपैट पेपर ना, तो जीपैट पेपर भी सॉल्व करते नहीं. आप सोचो कि मेरे को ये क्वेश्चन 36 सेकंड में ही खत्म, मैं इस तरह से गया था. एंड आपने सिलेबस में भी देखा होगा कि मैंने बताते गया कि वो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर रिलेटेड फॉर जीपैट, दीज आर द स्पेशल पॉइंट्स व्हिच आर रिलेटेड फॉर नाइपर. तो नाइपर का तो क्या कॉमन है कि ओनली 30% डिफरेंस है, लेकिन वो जो 30% डिफरेंस है ना, वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटीज, वो सब में बहुत मतलब आ जाता है. और कोई कोई टॉपिक्स है, जैसे मैंने क्यूएस और कैड बोला, तो वो पता है कि वो नाइपर के लिए फोकस थे, और बाकी सारे टॉपिक्स जीपैट और नाइपर में कॉमन है. सो व्हेन यू आर रीडिंग नो, यू रीड थरोली, आप कंसेप्ट पूरे क्लियर रखो. तभी आप मत सोचो कि मुझे जीपैट अलग है या नाइपर अलग है. कंसेप्ट पढ़ते टाइम आप सोचो ही मत दो एग्जाम के बारे में, वो मतलब आपको कंसेप्ट पूरे क्लियर रखना है. पेपर सॉल्व करने के टाइम में, और जब आपका चीज हुए ना, तभी आप एनालिटिकल थिंकिंग लगाओ कि नहीं भाई, ये मेरे को जीपैट का पेपर, मेरे को 36 सेकंड में एक क्वेश्चन ही सॉल्व करना है उस हिसाब से. इसलिए मैंने मेरा फोकस हमेशा नाइपर पे रखा, जीपैट ऑटोमेटिकली हो जाता है. तो दैट्स नॉट एन इशू विद दैट, क्योंकि जीपैट में टाइम कंस्टेंट ज्यादा होता है. मींस यू कैन, मैं खुद का, मेरे को अब तक याद है, आई सॉल्व दैट 125 क्वेश्चन इन 1 और 1.5 आवर. उसके बाद मैं बाकी का टाइम में बैठ के बस देख ही रहा था पेपर्स, तो क्या क्या क्वेश्चन थे. सो जीपैट में देयर वाज वेरी मच टाइम, बहुत टाइम, एम्पल टाइम है. सर नाइपर का वो सर जीएस पार्ट के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए सर? क्या मतलब न्यूज वगैरह को फॉलो करना ये सब चाहिए? फॉलो करो, न्यूज फॉलो करो, और स्पेसिफिकली ना कि जो भी चीजें चल रही है, कि लाइक फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उस टाइम, तो वो सारे चीजें फॉलो करो, और लेटेस्ट न्यूज यानी फॉलो करो उस टाइम. अब फॉर एग्जांपल मेरे टाइम में क्या था कि अब तक मुझे याद है 2020 का, चाइना ने उस टाइम फर्स्ट आर्टिफिशियल मून बनाया था. तो
तो वो ऐसे में सोशल मीडिया पे लाइक आई वाज टू फॉलो ऑन लिंक्डइन और ऑल दस थिंग्स, न्यूज और जर्नल्स हैं, तो वो फॉलो को मुझे तभी मेरे को दिखा कि ओके चाइना इज द फर्स्ट कंट्री टू क्रिएट आर्टिफिशियल मून ड्यूरिंग दैट, तो ऐसा वो देख रहे, तो वो क्वेश्चन लकीली नाइपर में आया कि आर्टिफिशियल मून इज क्रिएटेड बाय विच कंपनी। वो 2-3 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे, एकदम जनरल स्टडीज के रहेंगे, लेकिन फार्मा जनरल नॉलेज का मैं ज्यादा फोकस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अगर बोलूँ तो उस टाइम एकदम कोविड का ही चल रहा था, तो वो फार्मा जनरल नॉलेज में भी आ जाता है उस केस में कि कोविड का पूछो। और अगर मैं अभी अगर बोलूंगा तो 2000 फॉर एग्जाम्पल यू कैन से लाइक टाइप 1 डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए आज तक कोई थेरेपी नहीं है। ये मैं स्टेटमेंट सही है कि गलत है वो तुम बताओ। There is no therapy available to treat type 1 diabetes till yet. Sir. Is it right or wrong? Yes, sir. It is right. It is right. कहाँ से पढ़ा? बुक्स में पढ़ा होगा। सर एज सर हम लोग तो यही सर, ये मेनली जितना हम लोग ट्रीटमेंट लेते हैं ये सिर्फ कंट्रोल करता है, नॉट ट्रीट द प्रॉपरली। आई एम टेलिंग यू टू प्रिवेंट। प्रिवेंशन के लिए कोई मेडिकेशन आज तक, टाइप 2 डायबिटीज तो ठीक है, वो तो एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है। टाइप 1 डायबिटीज के लिए कोई प्रिवेंशन के लिए कोई थेरेपी है क्या? ऐसा मैं आई एम आस्किंग। वन के प्रिवेंशन के लिए सर, पर सर मेडिकेशंस में और लाइफस्टाइल चेंजेस। No, I am telling treatment, a drug for prevention of type 1 diabetes. सॉरी सर, आई डोंट नो सर। यही चीज है। Okay, I am not telling you that you do. It is like it is a learning for all of you. See, 2022 में there is a teplizumab is approved in November 2022 for prevention, delaying the progression of type 1 diabetes in this thing. So it is a first in class therapy. This is there. It is So a from where monoclonal. we can get This this is knowledge? Yeah, so this is like you need to stay updated. You need to look at the US FDA sites. You need to look at what are the new drugs, what are coming into. क्योंकि देखिए आप बुक्स में पढ़ोगे that is a age old thing. It's good for clearing the concept, but latest चीजें क्या चल रही है, that is why I told you no. आप अगर इम्यूनोलॉजी आपको टॉपिक बस इतना छोटा सा या फिर आप कभी स्किप भी करते होगे, लेकिन nowadays autoimmune disorders are very booming. सारे इंडस्ट्रीज ये रेयर डिजीज पे और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स पे बहुत फोकस करे, बिकॉज इट इज लाइक एक्चुअली इट इज एक्चुअली मतलब क्या पूरा क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की डिस्टर्ब हो रही है ड्यू टू दिस काइंड ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स एंड देयर आर वेरी लेस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। सो सारे इंडस्ट्रीज इस पे लगे हुए हैं सो इन दिस थिंग। सो यू नीड टू, दैट इज व्हाई क्वेश्चंस और ये सब मतलब उस केस में आ गए, एंड दैट काइंड ऑफ हॉट टॉपिक्स यू नीड टू स्टडी। अभी जैसे मैंने बोला कि नो वन न्यू लाइक T1D के कोई प्रोग्रेशन डिले करने के लिए कोई ट्रीटमेंट है क्या? दिस इज अ फर्स्ट क्लास एजेंट, फर्स्ट इन क्लास, यानी कि कोई आज तक दुनिया में पहला एजेंट है दैट इज यूज्ड फॉर प्रिवेंशन और लाइक डिलेइंग द प्रोग्रेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज आपने बुक में पढ़ा होगा, इट इज ओनली इंसुलिन इज एप्लीकेबल, दूसरा कोई ड्रग है ही नहीं, बट देयर इज अ ड्रग which is approved in November 2022. So ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप जनरली कोई भी बंदा दिखेगा कि टाइप 1 डायबिटीज के लिए कोई ट्रीटमेंट, डिलेइंग द प्रोग्रेशन के लिए कोई होगा, तो वो नन ऑफ द अबव कर देगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा लगेगा बिकॉज बुक्स में नहीं है, बट इट इज देयर एक्चुअली। सो दैट काइंड ऑफ थिंग यू नीड टू स्टे अपडेटेड। आप यूएस एफडीए की साइट्स देखो, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि जब आपको स्ट्रेस आ रहा होगा पढ़ते पढ़ते, जैसे कंसेप्ट पढ़ोगे इतना एक 2 घंटा पर स्ट्रेस आएगा, you just shift your focus from books to internet and just shift the focus towards the NIPERs, or you shift the focus to FDA website and to see the latest trends in this. ये क्वेश्चन this might come as a question sometimes, और ये तो मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया, ऐसे भी बहुत सारे चीजें जो कि आज तक अभी फर्स्ट क्लास एजेंट्स, फर्स्ट इन क्लास एजेंट्स अप्रूव हुए, जिसका बुक्स में कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि बुक्स में लिखा होगा देयर इज नो क्योर उसके लिए। सर बुक्स में, कॉलेजी के ही बुक्स में बहुत चीजों के बारे में अभी भी अननोन कर देते हैं वो लोग। हाँ अननोन है ना, तो दैट द थिंग्स की, इसलिए वो मत ढूंढते ना कि ये अननोन है तो ये ढूंढने रहे। यू जस्ट एवरी मंथ यू जस्ट स्टे अपडेटेड। एफडीए की वेबसाइट हर मंथ में चेक किया जाओ कि क्या क्या चीज है स्टार्टिंग से, और वो नोट डाउन करते रहो कि क्या ये मॉलिक्यूल है, इट वाज अप्रूव्ड फॉर दिस, इट वाज अप्रूव्ड फॉर दिस इंडिकेशन एंड इट्स मैकेनिज्म एक्शन इज XYZ। तो आप हर मंथ में चेक करते रहो यूएस एफडीए अप्रूव्ड वेबसाइट, सो उस वजह से यू विल बी स्टेइंग अपडेटेड कि क्या होता है। और नॉट ओनली अबाउट द यूएस, इवन इंडिया की भी अचीवमेंट्स है।
So follow the CDSCO website also. अभी के अभी भी कितने formulations ban हो चुके हैं अभी. So just you need to stay updated about this kind of knowledge also. Also, there is a first antibiotic which is developed by India, which is developed by Indian company. So that also is there. So खाली मैं foreign countries के updated रहने के नहीं बोल रहा हूँ. It is like Indian also. That also you have to stay updated. और यही de-stressor है. These are all your de-stressors in the examination. थैंक यू सो मच सर. Yeah. इंटरेक्शन जो आज हुआ सर बहुत बहुत हेल्पफुल था सर. Welcome. Yeah, my pleasure. Thank you, sir. Yeah. Yes, Geetika, what you told? Thank you, बोली मैम कुछ. Okay, welcome. My pleasure. Okay, fine. Yes, so thank you so much, sir, for giving this wonderful session and sharing your expertise with our students. Thank you. so much. It's my pleasure. Yeah. So yes, Amit sir, you want to share anything? Nothing, just yes, Susmit sir, anything you want to share? No. Yeah, you please continue. Okay. Yeah. Yeah. I appreciate your energy and enthusiasm and dedication for this continuous learning of almost you are talking 3 hours, and continuously you are interacting with the students. And definitely these are all practical questions the student asks. So I appreciate students' question also. Each question is equally feel by each and every aspirant, and hopefully this conversation will bring something, and even like preparation, the confidence, management, everything you covered in today's session, that will definitely bring changes and help them to crack NIPER and of course GPAT also. So thank you for this session and delivering this. So hopefully we also expect this some kind of the same kind of sessions in future also, which help our students for building their career in the pharmaceutical industry. Yeah, and I would like to thanks our all the participant also. So this our webinar is conducted by Global Pharma Academy, which is ISO and MSME certified organization from Pune. So we are a training institute also, which provide different certification courses such as pharmacovigilance, data management, regulatory affairs, medical coding, medical writing, advanced SAS. Okay, so the basic reason is to know everything related to the domain, so that you will get actual knowledge which is required by the industry at entry level. Yeah. Thank you, Susmit sir, again. Don't need to talk more. Everything is really good. Really appreciating your each and every effort, okay, and your dedication. I wish you all the best again for your same your journey also, and even we are also happy to connect today. Each and everything is we are also enjoying today's session. Thank you. Thank you. It was my pleasure to guide students, and thank you for this opportunity. So it's great to interact with students and new future pharma talents, or the future leaders, if I can say. So thank you. Exactly. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Yeah. So we'll wind up the today's. Okay. Sure. Thank you. Thank you.